Today will be Northern. They've got 6 points. If they win, they'll definitely jump up to number 3 minimum. But they'll have to really play good cricket today in order to beat a tough side like KP. Now, you mentioned about Tayyib Tahir, how he's been performing throughout the tournament. He's been brilliant, and he's been probably the mainstay of the Central Punjab batting. And others are basically batting around him. And yesterday's knock of his and Faizan was just completely different of what overall Central Punjab puts on the table. I'll give the credit to Faizan more than Tayyib Tahir, because earlier in the first 3 games we saw Tayyib Tahir was the lone warrior. He was the only one scoring runs from one end. But since the time that Faizan has come into the side, he has given the team the different feel, because runs are coming from both ends. Both are attacking players, similar in nature, and they've attacked KP. That's a big thing, because KP, as you just mentioned, are at the top of the table. So coming from at the bottom of the table, attacking the main team, I think that will give a lot of confidence to Central. All right. Well, Central doesn't play today, so it's Northern versus KP. And Northern, they have their own set of issues. They've been up and down in their performances, but now they need to winning games. Important part would be how do they come out with, and what plan do they come out with against KP today. But have you seen Northern? They've got a good opening pair. They changed it. Hassan Nawaz was left out in the previous game, but they actually won it on the last ball. So those kind of wins actually add a lot of confidence to you. Definitely. I think they're a young side, but they've got match winners in their side. Amir Jamal, we know that. He's performing brilliantly for Northern side. And Sohail Tanveer also, not with the ball, but with the bat too. He's playing at number 6, and definitely I think he's somebody to look for in this match too. Okay, let's head out and check out what the pitch is like. Very good afternoon here at Multan Cricket Stadium. It's a cool breeze blowing around here, but the temperature will definitely go down. Right now, what temperature looks like, it's 31 degrees and the humidity is 65%. Right, so this surface, it's a brand new one. No match has already been played on this one. It has some cracks on it, if you can see. Some opening cracks there for sure. They will come into play later in the game. Some live grass as well. So fast bowlers, you might get some assistance on it, and spinners can come into play when it looks like a very dry surface, so there won't be a problem. Batters, yes, you have to be very patient and spot on with your shot selection. Best idea for scoring runs, go down the pitch, because it's a very, short side of the boundary. The square, it's large one, so bowlers hit the hard length and make and force batters play across the line, so you can get your chances. Runs, it's not to worry about. There are runs, that's very evident in all the matches we've seen. Wickets, that's what you need, bowlers. You cannot contain runs. So focus on these 3 stumps to make your chances to buy wickets. Now we know what the pitch is like. Let's head out, and the 2 captains are ready with Shah Faisal. Game number 21 of Kingdom Valley National T20 Cup. And this one is coming between Northern and Khyber Pakhtunkhwa. I've got the 2 skippers. Sohail Tanveer is standing in for Umar Amin, and Khalid Usman from KPK, the match referee, Mr. Iftikhar Ahmed. Khalid has got the coin. Heads is the call. And heads it is. Northern? बैटिंग कर रहे हैं हम. Sohail? बैटिंग कर रहे हैं जी हम. और पिच की कंडीशन आपने यहाँ देखी है, रन्स बन रहे हैं अच्छे, क्या कहते हैं? सिमिलर पिचेस हैं, पिंडी में भी ऐसी थी, अभी यहाँ पे भी जो 2-3 मैचेस हुए हैं, हाई स्कोरिंग गेम्स हैं, तो आइडिया इज टू पुट रन्स ऑन द बोर्ड, एंड व्हेन यू हैव रन्स ऑन द बोर्ड देन वी हैव गुड इनफ बॉलिंग टू डिफेंड. एंड व्हाट्स द न्यूज़ ऑन उमर अमीन? He got injured unfortunately in the pool yesterday while the session, so I'm standing in here. We have a youngster came in, Atif. He scored some runs in second 11, so I wish him all the best. Okay, Sohail Tanveer, have a good game. Thank you ji. Khalid, टॉस तो हार गए? नहीं, कोई मसला नहीं है, टॉस का तो इतना इशू नहीं है. डे का मैच है इंशाल्लाह, तो अच्छा बॉलिंग करेंगे और रिस्ट्रिक्ट करेंगे इनको. और एक सवाल जो आपसे हमेशा पूछने को दिल करता है कि अगर कोई एक बात बताएं जो आपकी टीम में जो विनिंग मेंटालिटी है, जो विनिंग सीक्वेंस है, उसकी कोई एक रीज़न. बस जेलों के खेलते हैं. और आज की टीम न्यूज़? एक चेंज है, अरशद इकबाल की जगह एहसानुल्लाह खेल रहा है. चलें खालिद, हैव अ गुड गेम. थैंक यू.
So the news from the center is that Sohail Tanveer has won the toss and he's decided to have a bat first. All right, have a look at this. Ali, we talk about KP. They've tried to strengthen their batting. They've got Israrullah and they've left out Arshad Iqbal. That's a bold call. Oh, Arshad Iqbal is there. I was told Arshad Iqbal is not playing. I really don't know. Okay, so who's out? But we know Israrullah is in and the captain said that Arshad Iqbal is out. So I think there is a mistake over here. Northern, again, they've left out the services of Hassan Nawaz. Of course, that's a surprising change for me. I thought that on a pitch like this, they will play him because he's somebody that will suit. His batting style will suit on conditions like this. But and then another surprising part is unfortunate change for Northern. Umar Amin being injured in the morning and he's not included in the side. That will definitely dent their chances, Northern, because he's such a senior campaigner. Is Northern batting or fielding? Northern is batting first. They won the toss and batting first. They probably learned something from Central yesterday because they batted first, attacked them, put runs on the board and put pressure on KP. That's the right way to do it. Well, I guess when you talk about, I was talking about leaving Arshad Iqbal out, that's a bold move. Because he's been performing for them. So I know the batting has to be strengthened because lots of runs are available on this pitch out there. But you'll have to fill in somewhere for those 4 overs and good 4 overs. Let's talk about the predictions. You feel that batting first is a good idea. Who, according to not on paper, the situation here, who has a better opportunity? I think I'll definitely go with KP because they're such a side that they're never out of the game. Even yesterday, although Central played brilliant cricket, but still they made a match out of it. So against Northern, I think they're a young side, inexperienced. Without Umar Amin, I will tilt towards KP today. Okay. Head-to-head between the two, KP and Northern. How have they fared in the national T20? And you can see that Northern have an upper hand. But these numbers always are from the past. They don't really have any say on today's game. So this is how it is, that Northern and KP are facing each other in match 21. And Northern have won the toss. They've decided to bat first. We wish them good luck. We wish you good luck. You feel KP is going to get there. We hope so. Hope you guys enjoy the games. We got 2 lined up. It's day-night affair. Under lights. It's going to be fun.
Hello and a very warm welcome to Multan Cricket Stadium on a hot and sultry day here. This one, Kingdom Valley National T20 Cup, Khyber Pakhtunkhwa versus Northern coming your way. Well, we've seen similar kind of pitches here since we've been in Multan. Another dry one, straw-colored grass, plenty of cracks, but the surface on the top is quite hard. The sun has been beating down on it, so it will be interesting to see if it loses any pace. But overall, plenty of runs on this surface, and bowlers will have to struggle very hard and have to be very precise with their skills. Northern, they're batting first. They'll be without their regular skipper Umar Amin. You heard at the toss that he had an injury in the pool yesterday. Suhail Tanveer is filling in, and there's youngster in the side. Atif, he's been given an opportunity. Plenty of runs for him in the second 11. KP has left out Arshad Iqbal. That's a surprising change, but KP is known to do that. I think out of the box, fresh from the defeat in the last game. I'll pose them another challenge against a very good Northern side. All in readiness as Khyber Pakhtunkhwa is about to take to the field, and it's just about time to say a very warm welcome and a good afternoon to Marina Iqbal. Good afternoon, Shah Faisal, and a very good afternoon to everyone hearing us. It's going to be a good contest. Northern with the fourth change. Suhail Tanveer taking the responsibility, leading it. They seem really happy. Khyber Pakhtunkhwa did had one hiccup so far, and that was against Central Punjab. And they managed to win against the Giants so far of this tournament. Umpires taking to the field, and KP as well. They couldn't chase down the target in the previous game. They conceded 194 runs, Khyber Pakhtunkhwa. They'll be looking to put that right. Also, it was an off-color performance both with the bat and the ball from Khyber Pakhtunkhwa. But Northern, they had a good outing here. Herrera, fresh from his career best in this format. He'll be taking to the field. He had an excellent partnership with Nasir Nawaz as well. 132 runs in the previous game. Conditions are pretty much the same, and he would expect to do exactly what he did the other day. It's a really good induction to see Herrera in the playing 11, and he delivered with the bat. We had a chat early on. He did say that he had to work on his T20 skills. But the best thing is that he reads the game well. He's very technically sound. And he comes out and applies his shots. Nasir, he needs some more runs. He can obviously make an impact whenever he starts the innings. That's Herrera. Just 20 years of age, only 4 games, 92. The average is 30. Strike rate, early days, 137. But he's shown his prowess with the red ball. And now he'll be looking to make sure that he gets noticed in this format as well. Very, very talented, exciting player to watch. His partner is Nasir Nawaz. Still very young, 26 matches. That average and strike rate, he's better than that. He made his best score in the previous game as well, 47. We'll be looking to put a string of scores together. The senior pro, Imran Khan Senior, he has been exceptional in T20 format with the new ball, and even at the death overs, grabbing 4 wickets, giving 20. T20 best career so far. He likes to take early wickets. It's really important for KP to make a good, solid start up front. Just a regulation field, a wide first slip. Ring of fielders on the offside, 4 of them. All appears to be in readiness. As plays the call. Little bit of bounce for Imran Khan. He's tall, he gets that with the new ball. Normally looks to pitch the ball up, but this one he started off with a back of a length delivery.
Nothing unusual in the field. If you look around, Marina, just this regulation field. Fine leg is up in the ring. Square leg is back. And third man, that's the two sweepers. Yeah, usually he likes to pitch it up, bringing that slip fielder into the play. It's quite wide. Second slip. Herrera is really good off the back foot, so have to be careful in hitting those lengths. Early signs of some variable bounce. Herrera was expecting it to bounce higher. Just hit the bottom edge. Talking about Herrera, he had an excellent knock the other day. The most impressive thing was that he showed a range of strokes, and like pretty much modern day batters, and he exhibited all those skills. He was exceptional, hitting the ball whenever it was delivered in his zones, rotating the strike. Seems like he's learning the art how to build the innings in T20 format as well. We've seen him perform in the longer format, but the way he capitalized his innings and his start the other day, that was brilliant from him. And on each occasion when I spoke to him, he always makes the point very clear that he thinks transition from red ball to white ball is easier one. So he's based his game on the red ball game, solid technique, and then he can expand his range of strokes in this format. In the air, just a chip, but we'll have enough legs to go over the fence. Wasn't hitting it hard, but the timing was there. First boundary for Herrera. One of the attributes of his batting is he times the ball really well. He picked up the length early, it was coming into him. Have a look at that, just a flick of wrist. Never tried to overhit it. Good balance at the crease. Just the transfer of weight, a subtle front push allowed the ball to come close. It didn't take very long for the skipper to remove the slip. Imran Khan's angle is always in towards the batters because he bowls from quite wide of the crease. They plug that gap in mid-wicket. Extra bounce on that occasion. Harris had to leap and get the ball up above his head. Steep bounce on this occasion from Imran Khan Senior. He's trying to hit that hard length. Not slip anymore there, so have to be very careful. The field is set for those in-swingers. But it's good to see. Fast ball is getting some bounce on the surface. Already early signs of some invariable bounce. Couple bouncing high and one keeping low. This one is in the air. That mid-wicket fielder was in the game. Sahibzada Farhan lurking in there. Again, he couldn't cope with the bounce. Herrera hit him high on the splice. He just got cramped at that occasion. And lucky for him he did, because had it been middle, he'd gone straight to. These are the shots, the tremendous innings. He's really good on both sides of the ground. He likes to give it a bit of touch. Always timing well. That was a rare chance, half chance. But have a look at that. He's always on the top of the bounce whenever he's playing on the back foot. Really calculated his innings. Once again, that bounce this time. Well, first over is to go, anything to go by. We can expect that for the duration of the match. First over done and dusted. Northern, 4 for none. Ehsanullah will bowl from the media center end. Just 19 years of age. Third game, just the 1 wicket so far. Bold inclusion, they've left out the seasoned Arshad Iqbal.
Interesting to see if he gets any movement. There's a little cloud cover now at pitch side. There was some breeze earlier. Just the one slip in. Ooh, wow. What an absolute rip snorter that was. First delivery squared Nasir Nawaz up. He's a tall lad. Look at that, just banging in. Ah, surprised. He won't be allowing the batters to come onto the front foot that early. Announced his arrival at National T20. Well, we haven't seen much of that. Squared him up and hit him on the bicep. Quite tall. And this was expected. Nasir Nawaz is not known to hang back. Sometimes over-aggressive. He's very comfortable when it's the hard length. That's where he likes to exploit. But this type of length didn't carry that well. I think he was expecting a bit more bounce. And that obviously can create a little bit more problems for the batters. That double pace bounce. Like I said, he's pretty tall. If you look at his run-up, he's a little bit of arms and legs. You feel he's heading sideways. It's quite lean as well. Once again, making Nasir Nawaz hop. Getting that extra bounce that taller bowlers will get. Didn't expect that on this pitch, though. He's got a very smooth run up. Good action. Have a look at that. Looks like typical West Indian bowlers. Look at that. Good reach at the crease. Solid delivery stance. Pretty braced front knee, which means that he is using all his height. That is the reason he's getting the bounce. Edged over the keeper's head. Extra bounce. He has paid the price for that on that occasion, Ehsanullah. But he'll take a lot of heart from that because Herrera wasn't in control at all. Yeah, you shouldn't worry about these sort of shots. It was a good delivery, got bounce. Herrera will always go after those. He knows that that area is cleared to get runs. And did well to put some bat on it. Again, on the toes. We've seen him do quite often. Well, no wonder the world gets surprised that how come Pakistan gets so many good fast bowlers and the supply chain is relentless. Keep an eye on this youngster. Another bounce, edge and gone. You felt it was coming. Ehsanullah has announced his arrival. Wicket in the first over. All to do with extra bounce. He got his revenge. Herrera never covered the line. Stayed leg side-ish. And with a slip in there and the keeper, it's a very risky shot to play. Just a tickle, that's all he wanted. And he's got his first man. Trying to repeat that shot, but it wasn't there with the sort of field they had. Gone on 8, Northern 1 down on 9. Rohail Nazir is the new man. Just 20 years of age. He's been around for quite a while. Good experience of 54 games. He needs to progress to another level in his career as well. You feel like his career has stalled. Good opportunity. Usual skipper Umar Amin is not available. Plenty of responsibility. And look at that. 2 slips. A wide first slip and a second slip in place. Fuller length, but look at that bounce as well. This is an absolute sensational over.
from Ahsanullah. 9 for 1 after 2. Herrera wouldn't want to see this replay. Look at his feet. He was nowhere in position. Looking at the length, probably he was looking to play the ramp, which he does quite often. But on that occasion, the ball kept rising, got very steep, and in the end, he could just hang the bat at it. Well deserved, Ahsanullah. Another play and a miss. Imran Khan generating good pace of his own. But that over from Ahsanullah was absolutely sensational. That was brilliant over, and what that did is now push the batters to stay back in crease because they are expecting some bounce. Again, it's just a reminder what sort of bowler you're facing. Imran Khan, he usually likes to pitch it up. Nasir on this occasion, no feet movement, just a wild swing outside. Got the slip back in now. It's a pretty wide first slip, almost a second slip. Play and a miss. Very, very uncertain Nasir Nawaz. He hasn't found the middle of the bat just yet. But if you see the replay, you look at his feet, absolutely rooted to the crease. The modern day batters usually try to maintain that room outside Austin with not preferring to move their feet. But it's very dangerous, it's very risky. Look at that, it's going away, always going to go away. Usually he brings it back, but the seam position. Feet movement is a better option just to get on top of everything. Imran's angle from wide of the crease, it threatens to come in, but if he gets the ball to straighten, that's where he is defeating Nasir Nawaz. Once again from wide of the crease, this time pretty compact from Nasir Nawaz. Probably he would have to do that for a little while until he gets his eye in. Yeah, that's a good setup from Imran Khan Senior. It's 2 deliveries, he took it away from the right-hander and then just nipping it back. It's all about the mind games. Rohail has been around for a while now. He has this platform to perform and make himself knocking the doors. Edged, but all along the ground. Away from the body though, once again from Rohail Nazir. The extra bounce and a little bit of movement has really caught the northern batters off guard. We expected that from Imran, but that Ahsanullah over still fresh in the mind. Northern camp looking a bit glum. They lost their skipper, who's at the ground, which is a good sign. Slow delivery, looked like an off break. Did grip a little bit, was turning. Imran is a wily campaigner. He's really tied Nasir Nawaz. Just again nipping back in. Nasir Nawaz hasn't looked comfortable at all from the delivery 1. Very indecisive in his shot selection and no footwork at all. Just 2 coming so far of this over. It's a very quiet start for Northern's liking. Lost 1 big wicket, Herrera. There's trouble for Northern because they're very free-flowing. And if you bog them down, they're likely to do something indiscriminate. Went for the big shot, last ball of the over, but couldn't pierce the field. Excellent from Imran Khan. 11 for 1 after 3.
Northern, bit of a mixed bag for them. 3 victories and 3 defeats so far. The corresponding fixture against Khyber Pakhtunkhwa was a cliffhanger, which Northern lost by just 2 runs. But this is exciting. After that first over from Ahsanullah, you would be thinking more of the same, please, if you're a KPK supporter. 2 slips. And the keeper is standing well back because he's getting plenty of bounce. Off the edge, it will run away very quickly. Just angled bad, not the great technique, but Rohail Nazir will take the boundary. He's testing their technique for sure. Just a forward pressure. And then he came back, came quickly, just the slightest of edges, passing the second slip. You have to be very careful. It's kept a little bit low than his liking. Well, they'll take it. It's not easy to come on the front foot against such tall bowlers. The pace is there. Rohail seemed to be a little late. He was late again. That hit him on the arm. Ahsanullah has really took everyone by surprise, including the Northern batters. More evidence of that extra bounce. It's not just the bounce as well, it's the pace as well that took the batters by surprise. It keeps on rising, that's the issue. You have to be careful while attempting that cut shot. If you look at that, it went rising and begging. It's quick for sure. On the toes, Rohail Nazir still wasn't able to connect. To be very careful because you've got 2 slips and a keeper waiting for the slightest of the edges. Footwork has to be better. If there's such kind of bounce, this one did stay a little bit low. Kingdom Valley, a royal lifestyle. Go to the Kingdom Valley official Facebook page and get a chance to win exciting prizes, and you could be the next winner. It's a luxury to have such type of a bowler. Khyber Pakhtunkhwa already had ample sources in terms of pace, but the bounce, that's first one to see. And he has been hitting the right areas. Ahsanullah, delight to watch. Overstepping on that occasion, and the ball flew off the middle of the bat. Just behind square, umpire Zamir had a signaling a no ball. This one was better from Rohail. He just transferred his weight into the stroke. Just in his zone. Overstepping, that was cherry on the top. It's a big one. It's just the second no ball from KP so far. They have been very disciplined. Rohail deep in the crease, just a forward press again, but he managed because it wasn't bouncing. Good shot to get some confidence. Now the free hit is facing it. Ahsan obviously did play in 2 PSL games. 1 for 23 his figures, but I think over the last few months he must have gathered some pace because he's really generating good pace. It's a docile pitch, but he's getting the ball to get it through pretty nicely. 2 straight on that occasion. Wow, this is Imran Khan in the field, throwing himself around. That's what KP is all about, the teamwork. Imran Khan down at the boundary, saving a certain 4 for his team. Losing his line. Ahsanullah, have a look at that. It's a very smooth run up, good strides, arms moving. That's what you want to see from a fast bowler.
Slightly he increases the stride length. And have a look at that. Eye arm action. The front arm is perfect. And a good stride and delivery. In the air. And an easy one for Haris. It was just a matter of time. Nasir Nawaz didn't look very comfortable. I think the umpire wants to check the no ball. But this is nothing less than what Ehsanullah deserved. Yeah, it was just around the corner. It was a matter of few deliveries. That bounce was always testing them. Just to be sure, umpires are having a look at that. Seems fine, no worries. And the bounce has undone Nasir Nawaz. He wasn't comfortable at all. Gone for two, Northern 21 for 2. एहसानुल्लाह ने अब तक एक खलबली सी मचा दी है नॉर्दर्न की टॉप ऑर्डर बैटिंग में, और उनकी तेज और उठती हुई गेंदों का कोई जवाब नजर आया नहीं ओपनर्स की जानिब से। 9 पर पहली विकेट गिर गई और अभी अभी जब दूसरी विकेट गिरी है तो जीशान मलिक को मैदान में उतरना पड़ा है रोहेल नजीर का साथ देने के लिए। इमरान खान जूनियर अब आएंगे काम में सामने वाले एंड से, और इससे अच्छा आगाज नहीं हो सकता था। खैबर पख्तूनख्वा का सेंट्रल पंजाब से हारने के बाद गैर मुतवक्के तौर पर बहुत मुतासिर किया है अपनी रफ्तार से इरफान ने। जी हाँ बिल्कुल, ना सिर्फ रफ्तार से बट बाउंस से, जिस तरीके से उनको बाउंस मिला है बड़ा इंटरेस्टिंग होता अगर हम इनको रावलपिंडी पिचेस पे देखते रहे। देखिए एक बार फिर एक्स्ट्रा बाउंस और नासिर नवाज अगले पाँव पे ही खेलने चले गए, और जब आप एक बॉलर को ऐसा बाउंस मिल रहा हो तो ये अच्छा आइडिया नहीं है कि इस तरह का शॉट खेला जाए। और बहुत ही अच्छा आगाज इनके करियर का एहसानुल्लाह, एक अच्छा एडिशन पाकिस्तान की पेस बैटरी में। एक रन का और इजाफा। इनको इस साल हमने मुल्तान सुल्तान की टीम के साथ देखा था। एहसानुल्लाह जो हैं ये 2-3 रोजा मैचेस खेले हुए हैं, इनकी 6 विकेटें हैं और PSL 7 में 2 मैचेस खेले थे, 1 विकेट इन्होंने हासिल की थी। लेकिन जाहिर है कि इन पर काम किया है जो इनके हेड कोच हैं अब्दुर्रहमान, वो खुद भी फास्ट बॉलर रहे हैं, मुल्तान सुल्तान की टीम के साथ भी वो होते हैं, तो इनको करीब रहने का मौका मिला है जिसकी वजह से ज़्यादा बेहतर इस वक्त रिदम में लग रहे हैं। रन अप और ज़्यादा बेहतर हुआ है, एक रवानी है क्रीज तक पहुंचने में, और ये अच्छी खबर है। जी हाँ, थोड़ी हैरानगी हुई थी कि जब अरशद इकबाल को आज रेस्ट दिया गया, लेकिन उन्होंने उनकी कमी महसूस नहीं होने दी है, बल्कि एक सरप्राइज पैकेज बन के सामने आए नॉर्दर्न के लिए। दोनों यंग ओपनर्स को सरप्राइज करके आउट किया है बाउंस से। यार ये एहसानुल्लाह जो हैं ये भी लाहौर में खेलते हैं, जो मोहम्मद हुनैन को कल हमने देखा था फास्ट बॉलिंग करते हुए, तो ये उन्हीं के साथ क्लब क्रिकेट खेलते हैं लाहौर में। पिछले मैच में इमरान खान जूनियर ने 3 विकेटें हासिल की, सेंट्रल पंजाब के खिलाफ शुएब मलिक को बोल्ड किया जो बाउंसर की तवक्को कर रहे थे, और उसके बाद देख सकते बहुत दूर से खेलते हुए यहाँ ये कैद पे बैठे थे हुनैन टेल एंडर। बहुत ही अच्छा आगाज है यहाँ पे केपी की जानिब से। नॉर्दर्न ने टॉस जीत के पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया। शायद सोच रहे थे कि जिस तरीके से कल सेंट्रल पंजाब ने अटैक किया, काउंटर अटैक किया केपी को, ऐसा ही कुछ कर सकें, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी है, थोड़ा उस तरीके की फ्लेयर की कमी है। ऑल्दो नासिर नवाज मौजूद हैं, लेकिन हमने देखा है कि इतने अच्छे टच में नहीं है वो इस टूर्नामेंट में। 6 मैचों में सिर्फ 107 रन बनाए हैं, और हैरानगी हुई कि हमें हसन नवाज नजर नहीं आए पिंडी लेग के बाद। तो शायद ये पिचेस ऐसी थी, थोड़ी आसान कंडीशंस थी, उनको मौका दिया जा सकता था।
और पुल शॉट खेला, एक हाथ उठ गया था बल्ले के हैंडल से जीशान का, लेकिन इतना नहीं कि ये बाउंड्री ना पा सके। शॉर्ट गेंद को बहुत अच्छा खेलते हैं विकेट के दोनों जानिब जीशान मलिक। या ऐसे जैसे जान छुड़वाई है बॉल से, बहुत तेजी से बॉल उनकी बॉडी की तरफ आया और विद द फ्लो, एक जैसे एक इंटेंट होता है, एक नेचुरल शॉट होती है बैटर की, उसी एंगल के साथ चले गए और लकी रहे कि फील्डर वहां मौजूद नहीं थे और 4 रन हासिल किए। अपनी रफ्तार से ये भी सरप्राइज करने की कोशिश कर रहे हैं मोहम्मद इमरान जूनियर, क्योंकि जानते हैं दूसरी जानिब इरफान जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, मुकाबले पर आते हैं फास्ट बॉलर, और यहाँ मुकाबले पर हैं जीशान मलिक। शानदार स्क्वायर ड्राइव, 4 रन, और जब गेंद जीशान के बल्ले के मिडल से निकले तो फिर ये नहीं रुकती किसी के लिए। जहां बहुत ही शानदार तरीके से टाइम किया ये बॉल, वेट किया बॉल का, और प्लेसमेंट भी कमाल की रही है जीशान की जानिब से। बहुत ही टैलेंट मौजूद था, बहुत ही रेपुटेशन इनकी बहुत शानदार थी जब ये सबसे पहले क्रिकेट सर्किट में आए थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा पीछे रह गए। और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर बड़ी टीम के खिलाफ यहाँ अपनी टीम को मुश्किलात से निकालते हैं तो डेफिनेटली रिस्पेक्ट बढ़ेगी उनकी टीम में। अच्छा ओवर, अब तक 9 रन दे चुके हैं, क्या इसको मैक्सिमाइज करना चाहेंगे इमरान जूनियर? गेंद खाली गई, 5वां ओवर जाता रहा 30 पर 2। दोनों ओपनर्स को एहसानुल्लाह ने अपने पेस और बाउंस से आउट किया, हारिस ने दोनों कैच पकड़े, 8 और 2 रन बनाए, हुरैरा ने और नवाज ने। रोहिल नज़ीर, जीशान मलिक क्रीज पे मौजूद हैं। आज उमर अमीन की सर्विसेज नॉर्दर्न को हासिल नहीं है, सुबह स्विमिंग के एक सेशन में वो अनफिट हो गए, उसकी कमी उनकी जरूर डेफिनेटली महसूस होगी उनको। नॉर्दर्न को जख्म लगते रहे, खासतौर पर जो अली इमरान का जख्म था वो अभी भरा नहीं है। इस टीम की बैटिंग लाइनअप में नंबर 4 पर जीशान मलिक को अब खिलाया जा रहा है, तो ये तीसरे कप्तान हैं इस टूर्नामेंट में। सुहेल तनवीर, अली इमरान पहले थे, फिर क्योंकि उमर अमीन शुरू में दस्तियाब नहीं थे, अब उमर अमीन एक मरतबा फिर दस्तियाब नहीं, सुहेल तनवीर को आज क़यादत सौंपी गई। स्क्वायर कट करने के लिए गए, फिर बाल बचे, एक मरतबा फिर पेस और बाउंस एहसान की जानिब से। यहाँ पे दाद देनी होगी खालिद उस्मान को भी, उनकी कप्तानी को, क्योंकि उन्होंने तीसरा ओवर परसिस्ट किया है एहसानुल्लाह के साथ, क्योंकि अच्छे रिदम में लग रहे हैं, 2 विकेट्स हासिल कर लिए हैं। और यहाँ पे अगर रोहिल नज़ीर या जीशान मलिक को की विकेट हासिल कर लेते हैं तो डेफिनेटली ऑन टॉप हो जाएंगे केपी की साइड। जहाँ 2 फील्डर जो हैं इस वक्त स्लिप में भी खड़े हुए हैं, तो इससे भी ये बात साबित होती है कि विकेटें लेने की ख्वाहिश है। पुल किया, एक बार फिर गेंद तेज आई, नो बॉल निकली। ये दूसरी नो बॉल जो है आज के दिन एहसान ने की। लंबे लंबे डाक भरते हैं ये देखिए, हालांकि पिछला पांव क्रीज के पीछे होता है पिछली के, और अगला आगे निकल गया, क्योंकि खासा लंबा स्ट्राइड है टॉल फास्ट बॉलर का। यहाँ थोड़ी नर्व्स भी होंगी, बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं और अच्छे रिदम में लग रहे हैं, लेकिन नो बॉल से इज्तनाब करना होगा इनको, क्योंकि अच्छा आगाज है, आपको फ्री हिट्स नहीं देने। फ्री हिट है, इसलिए ये आउट शुमार नहीं होगा, रन जरूर बन जाएगा। और क्या ये क्रीज के पीछे थे, खालिद उस्मान ने बड़ी चालाकी से थ्रो कर दी, टहलते हुए आ रहे थे रोहिल नजीर, तो आया ये रन आउट हो गए हैं। क्योंकि जिस तरह का रद्द अमल देखने को मिल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के फील्डर्स खास से खुश हैं, उन्होंने यहाँ पर खुशियां मनानी शुरू भी कर दी। यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई है कप्तान खालिद उस्मान ने, और अगर ये इस तरह से विकेट हासिल कर लेते हैं तो ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी रोहिल नजीर के लिए। शायद टहल रहे थे, कुछ क्या सोच रहे थे, ओह शायद ही आउट हो जाएंगे। ये शायद नहीं, यकीनन आउट हो जाएंगे अली, क्योंकि वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि जो है इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो आसान लिया, सहल पसंदी का शिकार हुए। ये बहुत बेसिक बात है तारिक भाई, ये एक स्कूल बॉय एरर है।
कि जो चीज़ें सबसे पहले आपको बचपन में सिखाई जाती हैं कि आपको बल्ला ड्रैग करना है, और रोहिल नज़ीर जितनी क्रिकेट खेल चुके हैं उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि आप इतने कैजुअल लेंगे अपने विकेट को जब आपकी टीम स्ट्रगल कर रही है। जी हाँ, सही डिसीजन, आउट का डिसीजन दिया गया। यहाँ पे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी रोहिल नज़ीर को, क्योंकि ये अच्छा तरीका नहीं आउट होने का। और दूसरी जानिब दाद देनी होगी खालिद उस्मान को कि जितना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, चालाकी से उनको रन आउट किया, डायरेक्ट थ्रो मारी, 11 रन बना सके। 31 पर 3 नॉर्दर्न। आज मौसम भी कदरे बेहतर है, लेकिन नॉर्दर्न के लिए हालात बेहतर नहीं है, क्योंकि छठे ओवर का खेल हो रहा है और मुबस्सिर खान क्रीज पर आ गए हैं। 3 विकेट्स गवा चुके हैं और पावर प्ले अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और आखिरी विकेट जिस तरीके से गवाई है, ये एक हैरानगी वाली बात है, परेशानी वाली बात भी है कि एक यंग बैटर इतनी क्रिकेट खेलने के बावजूद इतना ख़राब एरर, ये एक अच्छी क्रिकेट नहीं है। मुबस्सिर खान को पावर प्ले में ही आज आना पड़ा। अभी 4 गेंदें बाकी हैं इस पावर प्ले की। एहसानुल्लाह जिनने तहलका मचाया हुआ है, और क्योंकि आसानी के साथ वो रन्स नहीं दे रहे, और बैट्समैन कोशिश करते हैं ऐसे बॉलर के सामने कि वो स्ट्राइक पर ना रहें। और ये देखिए अब ज़ीशान मलिक, क्योंकि क्रॉसिंग हो गई थी, इससे वो सामना करेंगे। फ्री हिट पर पहले कैच दे बैठे, वो शुमार नहीं हुआ, शायद ब्लॉक हो गए क्रीज, बैटिंग क्रीज के पास पहुंचते हुए मुमकिन है कि ये ब्लॉक हो गए हों। तारिक भाई, आप अगर उनको मार्जिन देना चाहते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली दीजिए, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक बहुत कैजुअलनेस है, ये स्कूल बॉय एरर है, क्योंकि ये बेसिक्स हैं जिसको आपको क्रिकेट को फॉलो करना है। जब आप बचपन से क्रिकेट खेलना शुरू होते हैं तो ये सबसे पहले आपको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। शायद वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि खालिद उस्मान इस तरीके से थ्रो कर देंगे। आपका मुकाबला केपी के साथ है, जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक की टॉप क्रिकेट है, तो आपको अपनी 100% एफर्ट करनी है, अपना दिमाग खुला रखना है, आंखें खुले रखनी है, कान खुले रखने हैं, तभी आप कामयाबी हासिल करेंगे। बहुत अच्छा यॉर्कर, पहले हमने बाउंसर्स देखे हैं और मुसलसल तीसरा ओवर कर रहे हैं एहसान। अभी भी कोई कमी नहीं है एनर्जी की, और यहाँ एनर्जी की खासी कमी थी रनिंग में। ये देखिए बिल्कुल 7 वाली पिच पर टहलते हुए आ रहे हैं, और हालांकि ये वहां पर भी लकीर लगी हुई थी, इनको अंदाजा था कि कहां पहुंचना है, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार बैठे। जहाँ ये बाउंसर्स होंगे, क्योंकि लेग साइड में 3 फील्डर हैं, शॉर्ट लेग पर भी इस वक्त कामरान गुलाम को खड़ा कर दिया गया है। स्मेल द लेदर, ये आज बार बार इसी तरह का एहसास रहा है। नॉर्दर्न में हालांकि बाउंसी पिचेस होते हैं, इस इलाके में बैट्समैन आदी होते हैं शॉर्ट गेंदों को खेलने के और बाउंस को हैंडल करने के, लेकिन ये इस तरह की सूरत हाल से शायद इतना इनका पाला पड़ता नहीं। इतने लंबे कद के फास्ट बॉलर को कम ही खेलने का मौका मिलता है। एक मोहम्मद इरफान थे कुछ अर्सा पहले तक। ये तो कुछ कुछ याद आ रही है, यहाँ जब वेस्ट इंडीज की टीम आया करती थी 80 की दहाई में पाकिस्तान में, और वो फैसलाबाद और लाहौर की पिचेस में जिस तरह उनके बॉलर्स बाउंसर्स किया करते थे। बिल्कुल टेस्ट मैच की तरह की बॉलिंग हुई है अब तक। एहसानुल्लाह की जानिब से स्लिप अभी भी खड़ी की गई है। नो बॉल निकली, ईगो के जाने दिया ज़ीशान ने।
हाँ, बहुत शानदार बॉलिंग रही है, लेकिन नो बॉल्स का ख्याल करना होगा, ध्यान करना होगा। तीसरा नो बॉल किया है अपने तीसरे ओवर में एहसानुल्लाह ने। बड़ा नो बॉल है ये इस क्रिकेट में। तो अच्छा प्रेशर बनाए रखा है, लेकिन आप रिलीज नहीं करना चाहिए आपको। 3 विकेट्स हासिल कर लिए हैं, छठा ओवर चल रहा है। अंडर प्रेशर है नॉर्दर्न की साइड, और ज्यादा बैटिंग है भी नहीं। इसके बाद आमिर जमाल को आना है, सोहेल तनवीर और बाकी बॉलर्स हैं उसके बाद। ये पहले 6 मैचों में सिर्फ एक ही नो बॉल की थी खैबर पख्तूनख्वा ने, और आज 3 कर दिए हैं तने तनहा एहसान ने। और 4 रन्स। ये फ्रेंच कट ऑफ साइड में खेलने के लिए गए जीशान। गेंद बल्ले के निचले हिस्से को लगती हुई बहुत करीब से गई उनकी स्टंप्स के। बड़ी आसानी के साथ इसे अपने ऑफ स्टंप पर खेल सकते थे। जहाँ रूम देना चाहते थे अपने आप को, कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन अच्छी चालाकी से बॉल किया है। और लकी रहे जिशान मलिक के 4 रन इनसाइड एज के मिल गए। 6 ओवर्स के बाद 36 पर 3 नॉर्दर्न। सरवर आफरीदी जो पिछले चंद मैचों से बॉलिंग करते हुए आए हैं, ये 4 विकेटें भी ले चुके हैं। ज्यादातर हार्ड हिटर के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन इन दिनों विकेटें भी लेकर दे रहे हैं। यार ये टाइम भी अच्छा है इनकी बॉलिंग करने के लिए का इस मैच में, क्योंकि अंडर प्रेशर है नॉर्दर्न। 37 रन पर 3 विकेट्स गवा चुके हैं। यंग मुबस्सिर, जिशान मलिक कम बैक कर रहे हैं, तो प्रेशर नॉर्दर्न पे ज्यादा बैटिंग है नहीं पीछे। अब उनको एक बैलेंस ढूंढना होगा जहां पे विकेट्स भी बचा के रखें और रन्स भी आए। ये DICC, ये डेफ इंटरनेशनल क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी है 2022, और इसके मुकाबले मुत्तहिदा अरब इमारात में खेले जाएंगे। भारत, पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें एक्शन में होंगी। दो रन ले उड़े, बहुत ही अच्छी दौड़। विकेटों के दरमियान जीशान मलिक और मुबस्सिर खेलते ही उन्हें इस बात का एहसास था कि फील्डर बहुत पीछे हैं बाउंड्री पर। इसरारुल्लाह, और उनके लिए मुमकिन नहीं होगा दूसरा रन रोकना। या रन्स ऐसे ही हासिल करने होंगे, रन्स बनाने होंगे गैप्स में खेल के, सिंगल 2 से, क्योंकि इतनी आसानी से बाउंड्रीज आपको मिल नहीं रही हैं। बॉलिंग बहुत शानदार हो रही है दोनों एंड से, और जिशान मलिक और मुबस्सिर को यहाँ पे कैरेक्टर शो करना होगा, थोड़ा पेशेंस शो करना होगा, और रन्स बनाने होंगे क्योंकि मिल नहीं रहे हैं। क्योंकि ये एक ऐसा खेल है T20 का जिसमें आपको अच्छी गेंद पर भी चौके लगाना होते हैं। और अब देखना ये कि यहाँ ये किस तरह से पेश आते हैं, इस तरह की सूरत हाल से निपटते कैसे हैं। 3 विकेटें गिर चुकी हैं, रन्स भी पावर प्ले में उस तरह से बने नहीं। क्या अपने अंदाज से खेलते चले जाएंगे। मुबस्सिर जानते हैं जिशान के वो जल्दी हिट आउट नहीं कर सकेंगे, वो ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ही बैट्समैन हैं। वही बैलेंस ढूंढना होगा कि जहां पे विकेट्स भी बचाई जाएं और रन्स भी लिए जाएं, क्योंकि आप ज्यादा ब्लॉक कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि 20 ओवर का गेम है। तो आपको ऐसा कुछ करना होगा। जिशान मलिक में डेफिनेटली पोटेंशियल बहुत मौजूद है। मुबस्सिर जैसे अभी आपने कहा कि 4 डे के ज्यादा माने हुए प्लेयर हैं रादर देन T20 के, तो ज्यादा दारोमदार जो होगा वो जिशान मलिक पे होगा कि बड़े रन्स, चौके और छक्के ये लगाए। फ्लिक किया और एक बार फिर दूसरा रन लेने का मौका है, इसे हासिल भी कर दिखाया। ये अच्छी पिच है बैटिंग करने के लिए। ये आखिरी जो शॉट था इससे जाहिर होता है अगर आसानी के साथ लेग साइड में आप फ्लिक कर सकते हैं तो गेंद, इसका यही मतलब लिया जाता है कि बल्ले पर आ रही है। आगे पिच किया बॉल था, रिस्ट का अच्छा इस्तेमाल किया। 2 फील्डर्स जरूर ले रखे हैं उन्होंने मिड विकेट बाउंड्री और स्क्वायर लेग बाउंड्री पे, लेकिन प्लेस दरमियान में किया और 2 रन हासिल किए। ये अच्छा टाइम है सरवर को, आपको रन हासिल करने होंगे क्योंकि ये 5th बॉलर हैं केपी के। ओह,
इस बार कटर फेंका और आखिरी मौके पर अपने शॉट को चेक किया, प्लेस करने से कासिर है जीशान। एक और बाउंड्री लेस ओवर था, 41 पर 3। पावर प्ले में 7 चौके लगे और विकेटें भी गिरी। एक और बिहाइंड हो गए थे। मोहम्मद हुरैरा पिछले मैच के हीरो थे और खासा परेशान किया यहाँ इरफान ने अपनी रफ्तार और साथ साथ जिस तरह उछलती रही उनकी गेंदें लेंथ से पुल करने के लिए गए। फ्री हिट थी, इसे कैच किया गया जो कि शुमार नहीं हुआ, लेकिन रन आउट जरूर शुमार हुआ। 2 विकेट्स हासिल किए हैं एहसान उल्ला ने। इसमें कोई शक नहीं है कि इस पूरे बॉलिंग यूनिट में सबसे कामयाब बॉलर हैं, सबसे अच्छी बॉलिंग की है। ऑल्दो रन्स थोड़े दिए हैं, 3 ओवर्स में 21 रन, इकोनॉमी 7 की है, लेकिन जिस तरीके से बॉलिंग की है वो शानदार है। बाउंस, पेस, थ्रेट रहे हैं वो नॉर्दर्न के लिए। माज खान जिन्होंने गुगली से बिल्कुल हिला के रख दिया था, सेंटर पंजाब की जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग थी बौखला गई थी। इनके सामने 2 बार ये हैट्रिक पर आ गए थे। आज देखना है कि वो इस मुकाबले में किस तरह की बॉलिंग कर पाते हैं। फॉर एंड से ही उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। जी, कल वाली पिच इनको सूट कर रही थी क्योंकि स्पिन हो रहा था, थोड़ा सा ग्रिप भी हो रहा था बॉल। तो देखना होगा यहाँ पे आज कैसे बॉल करते हैं। जीशान मलिक शायद थोड़ा तकलीफ में, उंगली पे बॉल लगा है और यही हम देख रहे हैं कि आज थोड़ा बाउंस हमें मिल रहा है, देखने में मिल रहा है बॉलर्स की जानिब से, क्योंकि एहसान उल्ला तो नेचुरली लंबे कद के हैं और बाउंस भी मिल रहे हैं, लेकिन सरवर ने भी अच्छे बॉल किए हैं। हमाज खान जब सेंट्रल पंजाब के खिलाफ बॉलिंग करने के लिए आए थे तो इनको रीड करना उसमें मुश्किल पेश आ रही थी। छोटे कद के स्पिन बॉलर हैं। हमाज खान ने काफी विकेटें उड़ाई। जहां 4 विकेट हासिल की थी सेंट्रल पंजाब के अगेंस्ट। बहुत ही शानदार कैच कॉटन बोल्ड किया। गुगली नहीं समझ पाए सेंट्रल के बैटर्स की, क्योंकि बहुत तेजी से आम इनका करता ये लेग स्पिन। बड़ी विकेट हासिल की और इसके बाद दोबारा अगले ही बॉल पे एक और विकेट हासिल की उसामा मीर की। बिल्कुल समझ नहीं पाए, अच्छी जगह पे गिरा हुआ बॉल और 4 विकेट्स हासिल की 46 रन देकर। और ये भी वही ऐसे क्रिकेटर हैं जो लाहौर कलंदर से पाकिस्तान डोमेस्टिक की तरफ आए हैं, उनके प्लेयर डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा थे और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने इम्प्रूव किया है। तो मुझे याद है जब सबसे पहले इनको मैंने देखा था, उस तरीके से इनकी बॉलिंग में जान नहीं थी, बॉल अच्छा गिरता नहीं था। लेकिन अच्छा क्रिकेटर वही होता है जो दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट दिखाता है अपने अंदर, और ये डेफिनेटली वन ऑफ देम है। मुल्तान में आज मौसम बेहतर है। कल की बारिश के बाद जो गर्मी की शिद्दत थी उसमें खासी हद तक कमी आई है और हल्की हल्की हवा भी चलती रही है सुबह से। मुल्तान शहर में बहुत बेहतर हो गया है। हम कह सकते हैं नीम खुशगवार मौसम है इस वक्त सदर्न पंजाब का। जी, और हमने शुक्र है आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी देखी है इसी मौसम के साथ साथ। और आप देख सकते हैं कि हवा तेज चल रही है आज भी। वो तो आपको देखते ही आ जाती है अली। अच्छा आगाज है मास की जानिब से। अगर लेग स्पिनर का लाइन और लेंथ अच्छा हो, अच्छी जगह पे गिरना शुरू हो जाए, तो कोई भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट हो, ये सबसे खतरनाक बॉलर होते हैं। जैसे 3 विकेट हासिल कर लिए हैं, चाहेंगे कि प्रेशर को बनाए रखें। 1 विकेट और हासिल करेंगे तो आप कह सकते हैं कि टेल शायद शुरू हो गई आमिर जमाल को निकाल के। और ये अच्छा शॉट, 4 रन मिल जाएंगे। ये बहुत ज्यादा शॉट थी। जीशान मलिक ने आहनी हाथ का इस्तेमाल किया। आउटफील्ड खासी बड़ी है लेकिन इसके बावजूद अच्छा टाइम किया हुआ स्ट्रोक था। जहां गुगली मास खान की जानिब से और अच्छी तरीके से रीड किया जीशान मलिक ने, और प्लेस भी कमाल का रहा। फील्डर ऑल दो मौजूद था लेकिन उससे काफी परे गया बॉल। मुसलसल दूसरी गुगली, इस बार ज्यादा फ्लाइटेड थी।
सामने खेलने की नाकाम कोशिश की जीशान ने। एक और ओवर सम्मत हुआ 46 पर 3। $46 for 3, and deciding to bat first. They've just probably not achieved what they would have planned. You just get that feeling. A bit of attack would be nice. KP would have worked out a lot of things, had a good discussion after yesterday's loss, because they are taskmasters. They don't like to just let the opposition off the hook. But yesterday they were just completely out of sorts. Today they look like a team has come out with a purpose. Should be runs here, at least a couple. I don't know what the hesitation was. There was always two there, and they completed easily. Especially it was towards the right of Israrullah, who's a left-hander. This is easy pickings compared to what the northern batters had to face earlier on in the face of Ahsanullah, who really ran in hard and knocked the northern batters off their feet almost. They do need a partnership. This one is 19 of just 20 deliveries. That early burst was really sensational from Ahsan. Now, Server is a military medium pacer, although he has the knack of picking up crucial wickets. In the air over the top. It's a good shot from Mubassir. He's looking proactive. Wasn't a real half volley, but he just leant into it and just hit it over the infield for 4. The bat turned in his hand slightly, but solid enough connection. Look at that. Not solid base. You see his back foot didn't allow him to have that solid base to push his weight into the shot. He'll take the boundary. Nine gone, 55 for 3. Mars was very good yesterday. He was amongst wickets, he was on target, he was getting grip off the surface.
And he actually changed the game in KP's favor for a moment. Had it not been Tayyip Tahir's knock along with Faizan, probably Central would have majorly struggled. It should be a wide, yes. Because they started falling like dominoes once again. This is not far away. This pitch is not far away from the pitch that was used the first day. And that had a lot of runs in it. Just about the application today, not having Omar Amin and losing 1 or 2 wickets foolishly, they just put themselves in pressure. Down the wicket, give the charge, yes, that's what I'm talking about, more positive intent. It's a T20, you got to score runs no matter how many you've lost. Ishan really used his feet really nicely. He's had a quiet tournament. He's a very good player. He would like to put things straight. First 6 in the 10th over. You don't normally see this in T20 contests. Ishan's eye is pretty determined. Like I said, he's had a quiet tournament. He would definitely wants to get back into the runs and make a meaningful contribution to his side, because today, like Sikandar said, Umar is not playing. A few very soft dismissals early doors. The run out of Rohail Nazir, probably the worst of them all. Still, Northern has enough time to recover from this. Omar Amin not playing today. He's hurt his foot. That's nicely done. That's 4. That's what they need to do. If Mars was the best bowler yesterday, attack him. That's how you take the fight back to the opposition. First 6 in the 10th over, that's absolutely unacceptable. You got to take your chances, calculated risks. This is smart, no risk involved, and you get a boundary. Nothing fussy about it, no force in that. Just street smart cricket. Just watch out for that googly. That's where Mahaz picked up all his wickets yesterday. So, the angle that we see at it, he shows it to the batters, like he did on that occasion. Back of the hand. Zishan and Mubassir will have to dig deep here at the halfway stage. Northern 68 for 3. The 3 wickets here. That's another one. Top edge. A little too early in the shot. That was a free hit, but then the run out came. Khalid Usman was smart enough. Game awareness there. That is really very, very poor cricket there from Rohail. He's an experienced man now. It was a free hit. How often do you get that? You get run out on a free hit. He will be cursing himself. And that's the man who caused that run out. He's back into the attack. Khalid Usman. It's a very, very experienced campaigner. 67 wickets. Look at that economy rate as well. Pretty good. Basir is charging. Did he get all of it? Just enough to get it over the fence. For a moment, his heart must have been in his mouth, because I don't think he could quite reach the ball.
He didn't hit the middle of the bat as well, but such is the power of these modern day batters. He went through with the shot. Look at the intent there. No half measures. Even when he felt quite away from the ball, he went through with the shot. This one is poor from Khalid Usman. That's an absolute gift. And Zishan capitalized on that. This is a good passage of play for Northern. Runs coming thick and fast. And the boundaries as well. Khalid will be disappointed with that. Just a free hit there for Zishan. Everyone. These two have started to take the scoreboard along. The 50 of the partnership has been brought up as well. Just 33 deliveries. Under the circumstances, a very good effort there from these two. Bassett disappointed. He wanted Zishan to respond, but that was the final delivery of the over. 13 of the over. 81 for 3. Bowling card again. I'm not really sure what's the story of Hassan Nawaz. He's been performing for them frequently from the Pindi leg, but over here they've opted for Herrera, which Herrera, of course, is a very good batter, and he's performed well, showed his skill the other day. They've kept Nasir Nawaz in the side. Unless Hassan is injured or, I don't know, not feeling well, I don't see him there. Or not available. But that's an absolute no-brainer. But if you see, they've got a good package there in terms of some youngsters, spin bowlers. Sohail Tanveer leading the side today. Two straight on that occasion. Mubassir is a very risky player. Seam up delivery from Imran. Mubassir didn't need second invitation. He's looking good today. He's had a quiet tournament by his standards, but look at that. That flick of the wrist really generated the power into that stroke. But it was there for the taking. You could see Imran was disappointed. He is gone, yeah. Imran wasn't sure if the umpire's given it out. He double-checked, straight away put the finger up. Short ball, not going very well with the Northern batters. You've seen Imran use the short pitch delivery to good effect in Rawalpindi. This time, once again, pushing Mubassir back. Steep bounce.
got the glove, I think, and Imran had to turn around and make sure that the decision has been made by the umpire. Mubassir, who looked good, his bark was better than his bite. 22, 86 for 4. Northern losing a wicket at the wrong time, one feels. But the new man in is Atif Khan. He's replacing Umar Amin. He's had a pretty decent run in the second 11. His highest being 67 not out. Strike rate of 120. Huge ask. His team is in trouble. But he has time on his side to make impact in this innings. A little more than 8 overs to go. A lot of bounce once again. Although it was dug in quite short. Very short. In fact, that was Mubassir. He's hopping, looking to get it over the head of the wicketkeeper. Not happy about something. Just learned that Hassan is not available anymore to Northern because of an injury. So he's already left the camp. So no wonder we were missing him the way he's gone. So it's a forced change. Because you rightly pointed out, Nasir has a very inconsistent run. But because of the unavailability of Hassan, he's kept his place. I don't know for how long he can do that, the kind of performances he's putting. But I just want to talk about this extra bounce. No one of us expected this pitch to bounce as much as it has. Really took the batters by surprise. And us as well. Other than that run out of Rohail Nazir, all the 3 dismissals were on quite short pitch deliveries and steepling bounce. Wicket didn't suggest anything like that, but Ehsanullah with his tall height really surprised everyone. And Imran, we've seen in Pindi leg, started to use the short pitch delivery to good effect. Happy to concede the single off the final delivery of the over. Northern 89 for 4. जीशान मलिक तन्ने तन्हा अपनी टीम के स्कोर आगे बढ़ा रहे हैं और नॉर्दर्न की टीम किसी हद तक संभल गई है इब्तदाई धचकों के बाद। खासतौर पर चौथी विकेट की मुबस्सिर के साथ जीशान की पार्टनरशिप थी ये। वाइड से आगाज किया माज खान ने, अभी तक अपनी पहली विकेट की मुतलाशी हैं। ये पैड पर लगी लेकिन स्टंप्स के बाहर चली जाती, शायद बल्ले से भी टकराई थी। जहां अंपायर
जो हैं जिस तरह खामोशी के साथ वापस चल दिए अपनी पोजीशन को, से जाहिर होता है कि बल्ले से ही टकराई थी, गोली करने की कोशिश की। आज काफी कश्मकश में रखा है नॉर्दर्न के बैटर्स को फास्ट बॉलर्स ने। केपी के मास खान ने इब्तिदा अच्छी की है लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस दे नहीं पाए। अच्छी पार्टनरशिप थी यहाँ पे, फाउंडेशन अच्छी मिल गई है लेकिन इन्हें बेहतर करनी पड़ेगी। आतिफ खान ये नए बैट्समैन हैं, पहली बार खेल रहे हैं टूर्नामेंट उमर अमीन की जगह पर, क्योंकि आज वो पूरी तरह फिट नहीं थे। सेकंड 11 से आए हैं आतिफ खान। वहां पर इन्होंने 31 रन की इनिंग्स खेली, फिर 67 रन की, और जारहाना बैटिंग करने की इनकी शोहरत है। लेकिन अभी तक बड़ी शॉर्ट लिफ्ट के साथ खेलते हुए नजर आए। अभी तक जितनी इन्होंने बैटिंग की है सीधे बल्ले से खेल रहे हैं और मेरा ख्याल है टाइम ले सकते हैं, यहाँ पे कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है। अच्छा बैलेंस भी है, रिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी इन्हें जिशान के साथ। फिर गेंद के गिरने का इंतजार किया, ऑफ द विकेट रीड नहीं कर सके थे, तकरीबन फ्लाइट में बीट कर लिया था मास खान ने। तो एक बात तो अब बिल्कुल तय है कि जीशान को इस सर पर सर जाना होगा इस इनिंग्स के आखिर तक, उनको खेलने की जरूरत है। लेफ्ट हैंडर के लिए डीप पॉइंट लिया है, शॉर्ट कवर है, अच्छा ओवर। एक बार फिर दोनों बैट्समैन बाउंड्री के मजाज नहीं थे। नपीतुली बॉलिंग लेग स्पिनर की, 93 पर 4। ये मैनहट्टन नॉर्दर्न आज पावर प्ले में 3 विकेटें गवा चुका अपनी। केपी ने शानदार बॉलिंग की थी। एहसानुल्लाह आज पहली दफा मैच खेलते हुए नजर आए और जिस तरह का बाउंस उनकी बॉलिंग में नजर आया, मुश्किल बहुत पड़ी थी नॉर्दर्न के बल्लेबाजों को। और अब मुश्किल एक और ये भी है कि इनको नॉर्दर्न को टारगेट करना पड़ेगा स्पिनर्स को, क्योंकि एक बार फिर जब फास्ट बॉलर्स वापस आएंगे तो जिस तरह का बाउंस इस विकेट में नजर आ रहा है, शॉट्स खेलना आसान नहीं होंगी। तो ये फायदा उठाना पड़ेगा स्पिनर्स पे इनको। यहाँ तो बाएं हाथ के स्पिनर खालिद उस्मान, जिन्होंने बहुत ज्यादा बॉलिंग की नहीं है, गाय बगाए आते रहे। अच्छा कंट्रोल है, पीएसएल भी ये खेलते हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए, लेकिन इस टूर्नामेंट में अभी तक स्टैंड आउट ये कप्तान रहे हैं। वो बहुत ज़रूरी होता है इस टीम की कामयाबियों में, इनका सबसे बड़ा हाथ है। हालांकि ये खैबर पख्तूनख्वा की जो टीम है इसमें कोई भी स्टार नहीं है, अगर देखा जाए स्टार जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ हैं। या शाहीन अफरीदी जख्मी हैं, उठाने में कामयाब हुए और सीधा हाथों में खेल दिया। और आतिफ खान, जिनके बारे में ख्याल किया जा रहा था कि वो बड़े शॉट खेलेंगे, उन्होंने अटेम्प्ट भी किया और रिवर्स स्वीप करते हुए वो एक आसान सकाई दे बैठे थर्ड मैन को। बाउंस ज्यादा कर गया था गेंद, जिसकी वजह से सही मिडल नहीं कर पाए, टॉप एज हुआ और सीधा फील्डर के हाथों में। बड़ी शॉट्स खेलना चाह रहे थे और ये इरादा भी ठीक था कि स्पिनर्स के पीछे जाएं, लेकिन एक्सिक्यूशन अच्छी नहीं कर पाए और इनका पहला मैच डिसअपॉइंटेड रहा। 2 रन बना के वापस 94 पे 5 नॉर्दर्न। स्टैंड इन कैप्टन है आज सुहेल तनवीर, उमर अमीन की गैर हाजिरी में। ओवर्स काफ़ी पड़े हैं। जीशान दूसरे एंड पे अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा। संभलने का मतलब ये कि रन ज़रूर हासिल करें,
लेकिन पार्टनरशिप की बहुत अशद ज़रूरत है अब नॉर्दर्न को। यहाँ तो कप्तान अब कप्तान के सामने आएंगे। तो हम बात कर रहे थे खालिद उस्मान ने, उन्होंने एक ऐसी टीम को खड़ा कर दिया अपने कदमों पर सिर्फ अपने फैसलों की वजह से, जिसमें कोई भी स्टार खिलाड़ी नहीं है, और यही कप्तान का कमाल होता है। ये देखिए इस बार स्टंप्स के ज्यादा करीब आकर गेंद की, और कैच लेने में एहसानुल्लाह को कोई मुश्किल पेश नहीं आई। इस तरह विकेटें गिरने का सिलसिला जारी है। पहली जो 3 विकेटें थी वो 31 रन में गिर गई थी। उसके बाद ये पिछली 2 विकेटें ये सिर्फ 8 रन में गिरी हैं नॉर्दर्न की। तो एक ही पार्टनरशिप रही जीशान और मुबस्सिर की, उसके दोनों तरफ जो है वो अच्छे आसार नजर आए नहीं। लेकिन नॉर्दर्न के पास डेप्थ है, उनके जो बॉलर्स हैं सुहेल तनवीर और आमिर जमाल, ये बैटिंग करने की अहलियत रखते हैं। बाल बाल बचे, फुल लेंथ गेंद थी और जोरदार स्वीप शॉट खेलने चले गए सुहेल तनवीर। चांस इनको लेना पड़ेगा, लेकिन जैसी केपी की फील्डिंग और बॉलिंग है आसान नहीं होगा। बीट हो गए थे बिल्कुल ही, थोड़ा आगे गिरा हुआ था गेंद था जिसकी वजह से ये स्वीप शॉट कनेक्शन नहीं हासिल कर पाई। तो दोनों एंड पर स्पिनर्स जो हैं वो अपनी बालादस्ती कायम किए हुए हैं। नपीतुली बॉलिंग कप्तान खालिद की, 97 मजमूई स्कोर 5 विकेट पे। खालिद उस्मान की कप्तानी की बात कर रहे थे। एक हुनर कप्तान में ये भी होना चाहिए कि जो प्लेयर्स मौजूद हैं उनका टैलेंट किस तरह यूटिलाइज किया जा सके, किस जगह पे किस प्लेयर से आप बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवा सकते हैं। और केपी की मैं बार बार ये बात करती हूँ कि हर प्लेयर परफॉर्मर बनना चाहता है, इस वजह से ये टीम बहुत ज़्यादा जल्द है। जब भी किसी को मौका मिला है, चाहे वो बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, वो जिम्मेदारी ज़रूर लेते हुए नजर आए हैं। माज खान ये राइट आर्म लेग स्पिनर हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गुगलिस का इस्तेमाल करते हैं। रात शादाब खान भी मुसलसल गुगलिस का ही इस्तेमाल कर रहे थे एशिया कप के फाइनल में। तो ये एक ऐसा दौर आ गया है जहां आप कह सकते हैं कि लेग स्पिन से अब ज्यादा गुगलिस आपको नजर आने लगी हैं इस फॉर्मेट में। ना सिर्फ लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर भी अब ज्यादा तेज और फ्लैटर ट्रैजेक्टरी के साथ गेंद करना चाहते हैं, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट में स्पिनर्स को अक्सर देखा गया है कि मार ज्यादा पड़ती है, बाउंड्रीज की ऑप्शंस बैटर्स के पास ज्यादा होती हैं, और वो फ्लाइट देने वाला जो रिस्क है वो नहीं ज्यादातर लेते। और पिचेस भी कुछ ऐसी हैं जहां पे टर्न हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता नहीं है, तो ये सेफ डिलीवरीज है। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की थी, लेकिन सही तरह गेंद के नीचे आ नहीं पाए। ये शॉट जो है रावलपिंडी में बैट्समैन जो है खेलना निस्बतन आसान था। ये देखिए, क्योंकि इन पिचेस में उतना बाउंस नहीं है मुल्तान की पिचेस में जितना कि रावलपिंडी की पिचेस में था। वहां बल्ला नीचे लाना आसान था गेंद के हिट आउट करने के लिए। अच्छा फुटवर्क दिखाया सुहेल तनवीर ने। नॉर्दर्न ने अपने 100 रन मुकम्मल कर लिए, जिसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा तगोदौ करना पड़ी मुल्तान की इस निस्बतन खुशगवार sepahar में। देखिए एक और गुगली, सुहेल तनवीर बाहर आए, खुद को तकरीबन यॉक करा लिया और जीशान मलिक सामने थे, इसलिए थोड़ा सा बरहम नजर आए माज। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, विकेटों का पीछा नहीं छोड़ रहे, बैट्समैन का भी पीछा नहीं छोड़ रहे और जगह नहीं दे रहे हैं बड़े शॉट खेलने की। इस पिच के बारे में आपकी रीडिंग है क्या? वैसे मरीना ये
जो है पहली जो 2 दिन की पिचेस थी उनसे ये कितनी मुख्तलिफ है। सुहेल तनवीर बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग में, बल्कि यूं कहना चाहिए कि बैटिंग में ज्यादा अच्छी फॉर्म में रहे। इस 1 रन के साथ स्ट्राइक वो अपने हाथ में रखेंगे 102 5 खिलाड़ियों के आउट होने पर। यहाँ सुहेल तनवीर ने अपनी बैटिंग का जलवा दिखाया अपने होम ग्राउंड रावलपिंडी में। खासे वहां पर बड़े बड़े शॉट खेले, यासिर शाह को भी उन्होंने छक्के लगाए थे। और खासतौर पर ये जो बलूचिस्तान के खिलाफ मैच था इसमें सुहेल तनवीर ने लांस क्लूजनर की तरह की बैटिंग की थी। आज भी काफी जिम्मेदारी इन पे आयद है। पिच की आप बात कर रहे थे, ये पिच जो पहले दिन जो मैच हुआ था उसके बिल्कुल साथ है और यहाँ पे बाउंस काफी अच्छा देखने को मिला। यहाँ जो स्पिनर गेंद छोड़ के बॉल करेगा उसको भी एक्स्ट्रा बाउंस मिलेगा। जो थोड़ा सा हिट कर रहा है उसका गेंद थोड़ा नीचे रह रहा है। रन जरूर मौजूद हैं, बहुत बड़ा टर्न हमें देखने को नहीं मिला। जो अच्छी टेक्निक के साथ जिन भी बल्लेबाजों ने अपने आप को अप्लाई किया है उन्होंने स्कोर जरूर किया है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक्सिक्यूशन जो है वो यहाँ ज़रूर मैटर करेगी और शॉट सिलेक्शन जब आप ज़्यादा फास्ट बॉलर्स को फेस कर रहे हैं बाउंस के साथ। इमरान खान सीनियर उनकी वापसी हो रही है। इस एंड से इससे पहले 2 ओवर किए थे कप्तान खालिद उस्मान ने, उनने खुद को अब आराम देने का फैसला किया है। और ये पहली गेंद पर उठाकर खेले, फील्डर तैयार हो रहे हैं। सूरज की चमक से बचने की कोशिश की और उसके बाद ले लिया कैच। ये मुश्किल कैच था क्योंकि सूरज की रोशनी आंखों में आ रही थी। कामरान गुलाम के कुछ देर के लिए उन्होंने इसका एहसास भी दिलाया लेकिन ये मौका जाया नहीं किया। विकेट मिल गई इमरान को, आहिस्ता गेंद आई ऑफ द विकेट। अक्सर ये इस तरह की लेंथ को बाउंड्री के पार पहुंचाने में कामयाब रहते हैं लेकिन ये स्क्वायर बहुत बड़ा है, थोड़ा सा डिप कर गया था। पूरी शॉट खेली भी नहीं, फॉलो थ्रू नजर नहीं आया सुहेल तनवीर की और इनसे उम्मीदें आज बहुत थी लेकिन सिर्फ 4 रन बनाने में कामयाब हुए। नॉर्दर्न 6 विकेटों के नुकसान पे 102। जीशान मलिक को दूसरे एंड पर एक ऐसे पार्टनर की जरूरत है जो बाकी मांदा ओवर्स उनके साथ मिलकर खेल सके। आमिर जमाल ने सुहेल तनवीर की जगह ली है। स्लो गेंद को जल्दी खेलने की पादाश में आउट हो गए और ये पैड पर लगी लेकिन बल्ले से भी टकराई थी, यही दिखाने की कोशिश की आमिर जमाल ने। सुहेल तनवीर अगेंस्ट द विंड भी खेलने गए और पूरी शॉट मुकम्मल नहीं की। इस तरह की बाउंड्रीज जो स्क्वायर आज बड़ा है, पिछले मैचेस में भी यहाँ पे देखा है, वहां पे आपको पूरी जान से शॉट खेलनी पड़ेगी क्योंकि हवा का भी फर्क आ जाता है और फासला जो है वो ज्यादा है। यहाँ हाफ हार्टेड शॉट खेली जिसका नुकसान उठाना पड़ा। नॉर्दर्न ने इससे पहले 3 मैचेस जीते हैं, 3 में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की टीम जो है सिर्फ एक ही मैच सेंट्रल पंजाब से हारी है। अच्छा शॉट, अक्सर देखा गया इनका एक हाथ जो है ये हैंडल से उतर जाता है जब ये हुक शॉट खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन पूरी तरह कंट्रोल में रहते हैं। इसके बावजूद इस बात को यकीनी बनाते हैं कि गेंद उठ कर ना जाए। पीछे फील्डर था उस संप में। अक्सर बल्लेबाज जब कंट्रोल में नहीं होते शॉट की तो वो अपना बॉटम हैंड छोड़ देते हैं ताकि शॉट जो है वो ज़्यादा अपिश ना जाए। यहाँ पे देखिए अच्छा बाउंस मिला है, देखिए उन्होंने अपना बॉटम हैंड हटा लिया
ताकि वो डोमिनेट ना करे और शॉट जो है वो कैरी ना करे. जब आपका अपर हैंड होता है तो कदरे जो गेंद है, जो शॉट है, वो नीचे की तरफ जाती है. तो मरीना, आपने आज पिच रिपोर्ट दी कि बाउंस है पिच में, और आप नहीं समझती कि रन्स भी फिर बनने चाहिए थे इस विकेट पर? यह बॉलिंग बहुत गैर मामूली होगी. देखिए, बाउंस जरूर है, रन्स भी मौजूद हैं, ये मैंने बात की थी, लेकिन गैर मामूली आज एहसानुल्लाह नजर आए. जिस तरह का बाउंस उन्होंने इस पिच से एक्सट्रैक्ट किया, वैसा कोई उम्मीद कर नहीं रहा था. अच्छी पेस के साथ जब भी इतना बाउंस मिलेगा तो बल्लेबाजों के लिए मुश्किल होती है. तब आप बहुत लिमिटेड हो जाते हैं कि क्या शॉट्स आप उनके खिलाफ खेलें. रन्स जरूर मौजूद हैं यहाँ. यहाँ शायद ये बाउंस जो है ये एहसानुल्लाह को देखकर ज्यादा लग रहा था. ये देखे, ये क्योंकि इमरान या जो दीगर बॉलर्स हैं, स्पिनर की गेंदें भी उस कदर जो है उठ कर आई नहीं. और आमिर जमाल, अब ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो ये उम्मीद दे सकते हैं नॉर्दर्न को, क्योंकि इनके पास जो है वो पावर प्ले है और ये बाउंड्री को क्लियर कर सकते हैं. ज़ीशान मलिक अपनी निस सेंचुरी से एक स्ट्रोक के फासले पर हैं, इसलिए पार्टनरशिप बड़ी कलीदी है. आमिर जमाल का बहुत ही अच्छा स्ट्राइक रेट है, 201 का स्ट्राइक रेट है. सरवर आफरीदी इनसे पीछे हैं, सिर्फ मोहम्मद फैजान और मोहम्मद इलियास इनसे आगे हैं. मोहम्मद फैजान, ये इन्होंने सेंट्रल पंजाब की काया पलटी आकर जो 2 इनिंग्स खेली हैं आखिरी. सलाहियत जरूर मौजूद है इनमें, लेकिन इस सरफेस पे थोड़ा सा ट्रिकी होगा. इन्हें पसंद है आगे का गेंद, उसको अच्छी हिट मार लेते हैं. अभी ये एक्स्ट्रा बाउंस की वजह से गेंद इनको लग गया. 16 पे नॉर्दर्न 106, 6 विकेटों के नुकसान. That's the story for Northern. After winning the toss and batting first, when top order collapses, this is what happens. 48, Zishan Malik still out there, but 38 deliveries for that. And he's been looking for partners there. Only one partnership with him and Mubassir. But 16 overs, 106 for 6. Got to pray hard. And they bowled well, especially the seamers. If you talk about Irfan Khan Senior, just look at the economy. 3 after 3 overs. Ehsanullah bowled beautifully. He got the bounce, he's got the pace. Imran Jr. also 1 wicket. Khalid Usman, the captain left arm spinner, getting 1 wicket also. After 16, it's 106 for 6. Northern in a bit of trouble against this top side of KP. That's the Northern camp. Ijaz Ahmed Senior, Samiul Niazi also there, Masood Anwar also there. They're super casual at the moment. Sleepy also. Ehsanullah, 2 for 21 in his 3. He's looked promising and good. First game for him in the national T20 is featured for Multan Sultan twice in the PSL. Took 1 wicket there. And he's enjoying his spell because there's a bit of bounce and he's looked good. Now what's the score that Northern would target? They've run out of firepower. Bit of muscle problem for Ehsan. Calf muscle, that's what he was holding. A bit of help from the captain, but yeah, it's hot out there. Got to take a lot of fluids to keep that muscles from not cramping up.
Yeah, earlier it was Amir Jamal who needed attention, and now it's Ehsanullah. You expect that, playing your first game of the tournament, big match. That's how he bowled earlier. It was beautifully bowled, that length. He scared those batters out, I tell you, because of his pace, his bounce, all of these, couple of these wickets. You can clearly tell that they just scared them out with that bounce. This one was way up in the air. They wanted to attack him. Well, that was the run out, I believe. Casual. All these wickets coming from back of the length bounce. That was probably not the right choice of shot for somebody who's playing his first game. Sohail Tanveer promoted himself up the order. He came before Amir Jamal. Lost his wicket too. So what can Northern do from here? 4 wickets, 4 overs. They would ideally like it to get to at least 150. No ball. He's bowled quite a few no balls in this match. 4th no ball from Ehsanullah in this game. Free hit. Not trying too hard maybe. But the good part is that he has not given away runs on these free hits. Only those no balls. They've not been damaging enough. Just 9 extras. It could have been worse. That should be a wide. Yeah. He's struggling a bit. You just get that feeling. That calf muscle is giving a problem to him. His run-up doesn't seem that fluent, that energetic. There you go. Again, that niggle is just not doing very well for him. It's not just one. It's both his legs. You see, it seems like he's pulling himself together to get to that popping crease. And then, of course, ending up with a no ball. Still a free hit. Hit hard, but straight to the field up. Yeah, that's the point I was making earlier, that the follow-up deliveries after no ball, he's not given away runs on those deliveries, on a free hits. Again, too full, with good pace. Amir Jamal wanted to go over that mid-off fielder. That's been the positive. Well, there's never a positive out of no ball, but they've got a wicket and they haven't given away many runs on those no balls. So it's all good. He's an excellent captain. Khalid Usman doesn't have many stars, big man names in the side, but the way he has managed this side over the years, it's just phenomenal. There's a deep cover in position for Ehsanullah. That's a very lazy shot. Will earn him a boundary. He's trying to move away and play the ball into the square region on the offside. He's managed to do that and also gets his 50 with this shot. Yeah, gave him a lot of room, and lucky for him that he just got the bat on it. Although not in full control, but the lucky part is that he played it over the head of that point fielder to earn himself a boundary and get to that important milestone, those 52 runs in a team that has been struggling. If you are able to score 50, you will definitely earn some respect. Just knocked him over. That is brilliant. He's trying to do different things. Why would you do that to somebody like Ehsanullah, who's bowling brilliantly? That is a wonderful wicket. Ehsanullah, his 3rd one. Have a look at that. That is not a right choice of shot. He deserved it. Definitely deserved it. A good inning, ending in a bad way. 52 of 40, 113 for 7.
Mehran Mumtaz walks out, 113 for 7. Dismal performance from Northern. They've just been all over the place. You don't see a game plan in their batting after winning the toss and deciding to bat first. They had a very ordinary power play with the bat, and then they've just been unable to gather any momentum at any stage. Should come back for 2. And it's just that they've been losing wickets in pair. 21-31, 86-94, 102-113. That's the wicket. Very ambitious. Usually he bowls a shorter one, so you're thinking that, you know, I can just ram shot it or scoop it. He's bowled a back of the hand delivery and straight into the stumps. Disappointed? So he should be. He's jubilant. Why not? He's bowled beautifully in his first game of National T20. He's been very impressive, although he's bowled a few no balls, but still whenever he bowls, it's just wonderful. Another good addition to that pace battery of Pakistan. There are so many of them bowling over 140 now. What are you going to do about them? Make 2 teams, A and B. But sometimes I say, you know, if you're so good, why not have 5 fast bowlers in your side? Forget spinners, and just keep bowling 20 overs with just 145 clicks. Don't let the opposition breathe. Should be a boundary. That's 4 more. Using the pace, ends up the over nicely for Northern. 120 for 7. Amir Jamal has been in a tremendous touch for Northern. The way he has been hitting in this tournament is just excellent. Just using the pace, nicely placed. That is an excellent shot, I tell you. There was a fielder there, but the placement was beautiful. It's 120 for 7. Now look at that, different stages. He's almost played at every stage in this man, because Northern batting has been struggling. 11 to 15 strike rate is 100, but it increases as the over increases. 16 to 20, 245. So you can tell that he, in the last few overs, is very dangerous. That's all Mehran Mumtaz has to do. Just take a single, give the strike back to Amir, and let him do the rest. Because he's the senior member. He's been into the runs. Imran Jr. into his 3rd over, 18 runs he's given. He's got all those variations with him. As we see the change in field, there's a fielder at deep mid-wicket, deep square leg, and fine leg back at the boundary line too. So it's pretty clear. We're going to have a leg side-ish line maybe. It should be 4 more. Amir Jamal, till he's out there, he will give hopes to Northern to get to a good score, a respectable score. But setting a score target, batting first, has always been so tough. What is good enough? What is not? Again, back of the hand. Good batsmen do read you as a bowler. Sometimes you get predictable with what you will bowl next. Will he try another slower one, or will he drop in a short one now? Oh, chance of a run out. He's thrown it at the wrong end. What was Mehran Mumtaz doing there? You're trying to keep Amir on strike and you're running those singles. There was no point. He was not even looking at his partner, and he just kept running. Lucky that he made it, but had he thrown the ball at the non-striker's end, it might have been trouble for Amir, and that would have been a disaster. Straight away apologizing. Yes, rightly so.
Change of field for Mehran Mumtaz as we see the fielder of third going back at the boundary line. There's a square leg inside the circle. Should be 2, could be 4. Oh, that's a good stop. He took off very late, Imran Senior. And they come back for 3. Great effort. You got to give it to him. It's not easy. The conditions, they're hot and warm. And when you bowl 3 overs, yeah, that's a top-class effort. No doubt about that. Certainly saving 1 run for the team. Imran Khan Senior. Yeah, he was asking the backward point fielder, what are you doing? Because could have been a better effort. That is why he took off very late from where he's standing, Imran Senior. It's a very wide third man. Now that's a very wide fine leg for the right-hander. That'll be 4. Because he's standing very wide. These runs are important. And this ball is not a very good one. Keeping in mind how he's placed his fielders. He's bowling short and he's not express fast. And that's not smart bowling. Although there are fielders placed on the onside, but if you keep on bowling it, you get too predictable. And to somebody like Amir Jamal, who's going to go after you, who's going to swing hard, the edges will carry to the boundary. And he's been in excellent touch. He's not going to miss out on these deliveries, those gentle leg side-ish. Missing leg, missing everything. Direct hit would be interesting, but no. Just a single of a leg by, end of the over. It's 134 for 7. "14 runs coming off Imran Jr.'s over. That's an expensive one. Looking at the condition, looking at the situation of the match. 134 for 7, and this is not an easy pitch, I tell you. There is something for the fast bowlers. Ball holding up a little extra bounce that we have seen from the pitches in the past few days. Rishan Malik has been the star of this northern batting lineup. 52 runs. Mubassir looked good for his 22. Rest, nothing to talk about really. Amir Jamal still there on 14. Good numbers for Senior. 3 overs for 9 runs, 1 wicket. Just need to finish well. Hit really hard. Hit really hard by Amir Jamal, but straight to the fielder though. Sabzada Farhan. You got to be careful. Sabzada Farhan dropped a sitter yesterday of Tayyib Tahir, and we all know what he did after that. Yesterday was the first time that I really felt that KP was under pressure. I've been following them for a lot of time, but yesterday was different. You know the reason why. It was hot. It was a hot day, black kits, and they played well. Tayyib Tahir and Fizan. That's the reason I can think of. Yeah, today it's a very cold day and they're wearing pink kit. It's the same. It's hot. They're still wearing black kits, but there's a difference in yesterday and today. Shot. And 1 bounce. Valuable runs here. I don't know why. What's the reason that all the bowlers, Ahsanullah, look at Imran, or before this Imran, all bowling short. Yeah, just because Ahsanullah has been successful with those short deliveries, but they must realize that Ahsanullah is a different bowler. He's got a high arm action, different pace, and that field set for that line. There are 4 fielders on the leg side. That does not justify. That's not good cricket from KP. They're just letting them go away. That length works.
Because from that length, the ball gets bigger on you. And it's on the rise when it passes you. The previous one was just a bumper. Have a look at this. Into the pitch, but the ball flying. You can't expect a tail-ender, somebody like Mehran Mumtaz, to get a boundary out of this. Oh, he will. Watch now. One for the over called by the umpire, square leg. Who's at point at the moment? Sometimes the umpires do that. Whereas the right-left combination is too much running around from square leg to square leg. I think with the consent, they just decide that I'll stand my ground. So for the left-hander, he's at point. The right-hander, he's at square leg. There he is, he's at square leg right now for the right-hander. Sometimes it also happens when the sun is right into your eye. You change positions, but right now the sun is. I think he's missed it completely. And the field is set for these sort of deliveries, those low full tosses dipping onto the batter. That is the disappointment that definitely showed on Amir's body language, because he knows that he missed out on that. Imran Khan, a very senior campaigner. Have a look at that field. There's one fielder, deep cover. The fielder at third is inside the circle, and rest are all on the leg side. Deep fine leg, deep square leg, long on in position. Last ball. Smashed away. I was just about to say good comeback, but he's ended up with 2 boundaries in the over. 10 gone in this. 144 for 7. Again, that length, that easy length for Amir Jamal, although there were fielders placed for these sort of shots, but he somehow managed to play it right between the two fielders. That's the type of form he is in, Amir Jamal. Everything is hitting, is going towards the boundary. 144 for 7 after 19. Imran will bowl the last over of the innings. He's usually done well when he comes and bowls the 20th. That's what we've seen from him lately. How good can he be today? Oh, come on. That was really not necessary. In 2 minds, should I do that paddle sweep or ramp it? But eventually just missing that. He's usually on target. And that's how he bowls the last over. No. The ball never arrived. Yeah, back of the hand. Too good for Mehran Mumtaz. Scored only 12 runs, 144 for 8 now. There's such a good bowling unit, this KP side. Although at one point we thought dropping Arshad Iqbal, we were not sure what was that, if that was a good idea or not. But the replacement, Ehsanullah, look at his figures. He's done a wonderful job. It's never easy to replace somebody like Arshad Iqbal. That would have given so much confidence to somebody like Khalid Usman that his bench strength is so good. Usman Shinwari, average of 14, strike rate 120, best of 36. That's out. Straight to cover. Shinwari has to walk back. Amir Jamal is trying to get to a strike. 9 down now with that.
Yeah, that is brainless cricket. Why would you do that? You've got a set batter, one of the better hitters of the side, of the tournament even. Just trying to be a hero. It's not the right situation. Just take a single, give the strike to Amir. It should be simple. Gone without scoring. 144 for 9. He's on a hat-trick. Junior, Imran Junior. Zaman Khan, he walks in to face that hat-trick delivery. Just one hat-trick at least. We've seen bowlers. Yesterday there were bowlers twice. Maz Khan was on hat-trick. Can he do it? That's the question. He's on him a single. Oh, it's gone through. It's 4. Amir cannot get strike. Zaman swings his bat, and there's some very casual fielding attempt from the man in the deep. Yeah, the substitute fielder, Niaz Khan, just overran. It's not a good way to end the inning. Definitely not. You're trying to save every bit of run, but if you give away these runs, it's not good for the confidence. Slower one. Single finally. Amir gets on strike with 2 balls to go. Shinwari wanted to go big, wanted to go over. Not happening. Maybe expecting a slower one, because we know that Imran Junior rather, he uses that back of the hand deliveries very sensibly. Sabzada Farhan didn't miss out this time. Can't come back for 2. It's got a good arm, Khalid Usman. 1 ball to go with Zaman Khan on strike. 150 up for Northern. Good total. At a position they were at one time, from there reaching on to 150 is a job well done for Northern. Good inning by Amir, but I still believe that he was not given enough strike in the end. Big shot, but won't go any distance. But they can come back for 2. 4 fielders, including the bowler, and they're coming back for 3. Yeah, that's not possible. 2 is okay. So eventually, at the end of 20 overs, 152 is what Northern have managed in the 20 overs. Another back of the hand delivery to finish off things. It went miles in the air and everybody was running towards the ball. I don't know what Haris was doing. Maybe he thought he could get to that ball. Sabzada Farhan making no mistake and ending the finish. They're all out. The very last delivery of the inning. They scored 152 runs. KP, they're a very good side. They'll be a happy one, because this Northern side is a dangerous side, but they've kept them quiet to 152. They kept on taking wickets. They were in the game all the time. Only Zishan Malik, Mubassir and Amir Jamal, they made few runs. Northern's batting, 52 of 40 from Zishan, and a partnership with Mubassir of 22 runs from him. And then down the order, Amir Jamal's 20 helped them to get to 152 in the 20 overs, all out. Three wickets apiece for Ihsanullah and Imran Jr., and a wicket each for Imran Khan Senior and Khalid Usman. Let's have a look at how Northern went on with their 20 overs with the bat. They won the toss, decided to come in and put up a big score.
with their two openers, Herrera and Nasir Nawaz. Short ball was the undoing of the opening pairs. Sanullah was good. This is one of those shots which he managed to get for a boundary, but this one he was in no position. Tried to run away from the ball. Getting those edges going, that's where two slips were in place. Sanullah banging the ball into the surface and playing a little early, getting that top edge. Ball was getting big on him, caught by the keeper. A few good shots were played through covers when the ball was pitched in full, and then this of a no ball. And Khalid Usman had presence of mind, ran out Rohel Nazir this way. Yeah, they bowled well, KP side as unit. Zishan Malik did show some resistance, but he fell short of the partners. Mubassir, yes, it did a little bit. Strokes were made. Zishan Malik using those feet brilliantly. And that death touch too. He was the only one who looked like that he's gonna get some runs. He played all around. He played spin very well. He played fast bowlers very well. Played shots all around the ground, and this was the moment when he lost his main partner, Mubassir. And after that, the wickets kept on falling, and there was a lot of pressure on Zishan. Sohail Tanveer promoted himself up the order. He could not do much. There was a pressure of scoring runs, and Zishan Malik, he's been brilliant for Northern in this inning. That's how he lost his wicket. Probably not, there was no need of that shot, and in the end Amir Jamal did show some resistance. That was a brilliant shot through extra cover, and he was helped by some average bowling in the end by KP side. They gave away some free runs, and that was a very good shot right between the two fielders. That was a brilliant delivery, just tipping on him. Shinwari wanted to be a hero, but not to be, and that's how it all ended. The very last delivery, it went mild in the air. They wanted a third one, was not there, and an easy run out to end the inning of Northern on 152. या एहसानुल्लाह आज के केपी के हीरो हमारे साथ मौजूद हैं। एहसान, आप हमें सुन सकते हैं? ये सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत शानदार बॉलिंग रही आपकी। आज क्या सोच के आए थे आप कि आपने डरा के आउट करना है इनको? हाँ सर, ये सोच रहा था आज मेरा डेब्यू है, इंशाल्लाह मैं अच्छी परफॉर्म करूंगा और अगले मैच के लिए अवेलेबल हूं। आपकी फिटनेस का पूछूंगा आपसे। आपका काफ मसल में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो अब बेहतर है? तो थोड़ा पिच के बारे में बताइए कि पिच कैसा खेल रहा है। आपने शॉर्ट डिलीवरीज इस्तेमाल की काफी, तो बाउंस है पिच में थोड़ा? बाउंस बहुत ज्यादा है और अच्छा बॉल जा रहा है। जी हाँ, बहुत शानदार बॉलिंग रही। तो आपको लगता है कि ये टारगेट चेज हो जाएगा? इंशाल्लाह हमारी बैटिंग अच्छी है, इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया एहसानुल्लाह। And that's what Khyber Pakhtunkhwa needs to do. 153 runs off 120 deliveries at 7.65 runs per over. We'll take a breather. When we come back, we'll have live action.
This is the aftermath of some exceptional bowling. Khyber Pakhtunkhwa taking on Northern in this afternoon game of Kingdom Valley National T20. Khyber Pakhtunkhwa had a chance to bowl Northern, who decided to bat first. That's how things unfolded. Nothing at the top. Exception of Ehsanullah made things very difficult for the Northern. 52 for Dishan Malik. He was the lone warrior. Mubassir Khan 22 tried to fight their way out. At the end, Amir Jamal with 20. They managed to put 152. First outing for Ehsanullah, and he made quite an impact, bagging 3 wickets, 3 for Mohammad Imran Jr. as well. Khalid Usman and Imran Khan Sr. with 1 wicket each. Look at that economy. Never let the momentum shift towards Northern. Northern will have to bowl really well and field exceptionally well to contain these guys under 152. The opening pair walking out, Saibzada Farhan. He's been gaining some momentum in his batting. Mohammad Haris, a lot is expected of him. The previous game, first one at Multan, wasn't an ideal start for him. But today it's a good surface, extra bounce, yes. It shouldn't be a problem for KP with the ample batting resources they have. He'll fancy his chances out here today. Mohammad Haris, he knows that he have to score runs. He's got the shots, just the temperament and shot selection, an area where he can work out. Haris has to perform. Saibzada Farhan has been in form, but Haris has been struggling a bit. His full shot, which he plays through mid-on, has been his undoing. Couple of occasions he's lost his wicket or been dropped there. Sohail Tanveer will look for some swing earlier on. They need to bowl them out or bowl very, very well to stop them from getting those 153 runs to win. One slip in position, you've got to be attacking as a Northern bowling unit, because you let them off the hook and they'll get to a flying start, and then you'll always be chasing the game. Match 21. And here is what you need to do as KP. Chance. He doesn't even throw it. Looking to exploit that extra bounce. Sohail Tanveer, he's the main key here, the spearhead of Northern's bowling lineup. Was a good length, played well. Just took the risk. That's what they're going to do. Rotation of strike. It's one of the attributes of KP batters. Haris on strike. Mid-on once again. And that's 4. Haris has been flirting in this area ever since he got into the playing 11. He always gives a half chance there. Again, just the hard shot. Wasn't in any position to play it. Oh, could have tried to dive it in front rather than just following the ball. He's not happy, Sohail Tanveer. You need to grab these chances. Yeah, at least stop the boundary. Can't leak runs, and standing a bit wide for Haris at mid-on. It has become a sort of signature for him to just go and try to enforce that shot. I've seen him many times doing that. Miscued shot, quite uppish. Maybe the mid-on could have moved a few meters in. And he got a boundary off it. He's up to a start. 5 men inside the circle on the offside, and a third man make that 6.
It's a 6-3 field, one man patrolling the onside boundary. That's a beautiful ball. It's cut him in two. Great delivery. Sohail Tanveer, just enough away movement to beat him. Saibzada Farhan never got in line. Was lucky he didn't found any tickle. These are the areas they need to bowl. They need to attack early on. That's the one that squares up the batsman, and then you get that outer edge. Your first slips come into play. Just that slight deviation that you need to get that outer edge. He would have gained some confidence. Got runs against his names. Few glorious strikes the other day. Off the back foot, he's very strong there. Whenever he's allowing the ball to come close to his body, that's when he's in most control of his shots. Saibzada Farhan. It's one of the ideal surfaces for him. Should be a single. Oh no, in fact more. And that's 4. Impeccable timing. That's exactly what I was talking about. When he allows the ball to come, plays right beneath his eyes, just angling it. Never tried to play it inside the square. Played in front of it to pace that gap. Huge opening there. Good steady shift, the weight. Glorious. Lowest totals defended successfully at Multan, 155. That was Northern versus CP, so Northern defended that. Today it's lesser. They've got to break that record. They've scored 152 today. Zaman. And it's over. Mid-on. Couple of bounces into the fence. Good straight start with the 590th 4 in the tournament. He loves to play shots with a horizontal bat this time. It was just the angle and the length allowed him. Managed to clear the infield off the front foot. It's a good hit. One would probably enjoy this surface. It's got express pace, the bounce can unsettle batters. They've changed the field now. It's got long on in place. I don't know if that's such a good idea up front with the new ball. Yeah, it will travel, but you've just hit a good shot. Now what has happened is they blocked his zone with the long on in place. He wants to be flamboyant. He's expressing too much too early. He has the arsenal, he has the shots. But as I mentioned, the temperament that's needed. Leading edge, and it just goes over point and cover. He's living dangerously there, Haris. And that's probably because of the lack of form. He's just trying to go too hard at everything. His top edge, lucky that he had some pace on it. Beats the infield. Again looking to enforce shots into the leg side. With Zaman having an angle, the ball keeps going away from you. It's not a wise shot, not a good selection.
Again, minimum feet movement. He's trying hard to go, slashing. Again, in the vacant zone, but not a very confident connection with the bat. You get two. Just appealing. Please tell me that he put his bat down. He dragged his bat down, not planted it. It's a direct hit that's hit the top of the stumps. The ball is not dead. You got to have game awareness. This will be very embarrassing if he's run out. Yeah, Ruhail was quite interested in it because he had suffered that early on in the first innings, but he was very casual. Let's see if Haris learned something from it. Just going up to check. That big smile can either be confidence or a sheepish smile. He's just coming lazily, nicely planting his bat like that. So he's good. He's safe. To keep your eyes on the throw. Where is it coming? Which end is it being thrown at? I think it doesn't matter. You have to finish your job as a batter. Reach the crease, drag your bat in, get inside, be safe. In a very casual attempt from Haris. It's not out. Just a bit of a hold up in play because of the side screen, and now it's sorted. Showing the advertiser, so he was unhappy. Now it's fixed. These are the electronic side screens which rotate and show you the sponsor name and then turn black, and then of course you got to put the cloth on this. They probably thought it's the over. Again, the call is two. It's a big vacant zone from long on to square leg. There's nobody there. Not in inside the circle, not in the deep. Two more to the total. 20 for no loss. He'll try and target the stumps to Hilton Veer. Hitting the right length. And also just that corridor, fourth and fifth stump outside off stump. It's pretty decent off the pads, Farhan. Captain. For those who are just wondering, Sohail Tanveer is leading the side today. In the absence of Umar Amin, he's hurt his foot. He's there in the dugout, in the dressing room, but Sohail Tanveer is leading the side. Got an added job to do now as a senior. That's the dressing room for Northern. It's in that Inzamam ul Haq enclosure. It's a big stand, that.
the local boy Inzamam ul Haq. And the opposite side is Ali Yunus's brother. It's Waqar Yunus stand. He should get some perks. Should get something special for working with Waqar Yunus's brother. Waqar Yunus also hails from this part of the world, that's southern Punjab, Bihari. So we should speak, Marina, we should speak to Ali Yunus. Being in this stand, probably we can get a chair named after us at least. Something like that. But it's a privilege to share the commentary box with his brother. Yes. There he is. How things unfolded. A bowler, and the other end it's a batter, Inzamam ul Haq. It's a good shot. Good confident shot, boundary. The lengths are not correct and right from the KP, or rather northern bowlers. They're going 10 runs and over at the moment. Cannot afford to do that. They need the wickets. Look at that. It's a big vacant zone, Marina. That length, even if he has a half a hit, there's nobody there to chase it or stop it. Especially with this pace, it's easy pickings. Farhan, he's always hanging on to the back foot, never shying away to play a pull shot. He was well in control. You need to have an express pace like Ahsanullah, who could really surprise with a shorter one. So Tanveer, he'll be punished every time he pitches there. Quick run there. What I'd like to see is maybe Zaman bowls the shorter ones because he's quick, and he bowls it to Haris. Because Haris has had a leading edge, one half a hit, one could have been a catch at mid-on. So we need to do that. If they are trying to extract something out of how KP bowled and the shorter ball was working, they need to then get Zaman to bowl that quick short ones to Haris. Because Haris is not going to shy away, he'll attempt. And that can create an opportunity. There you go. It's in the air, but it'll go all the way. The short ball and with Sohail Tanveer is going to be a bit of a bonus, really. 31 again, 11 run over. This was even better from Farhan. Again, the length on this pace, it's not going to create problems. It was Haris, I beg your pardon. He'll punish you. It traveled all the way, no problems there. On from front foot, that's expressive. 3 overs gone, 31, Khyber Pakhtunkhwa without loss. Sometimes you wish you were a bird and you just enter anywhere without a ticket. Just enjoy yourself, fly across borders, no visas, and have an aerial view all the time. Amir Jamal has been given the opportunity. He's replacing Zaman Khan, just that 1 over for him. Could have given Zaman another go. He hit decent areas, was getting bounces quick. Nonetheless, let me ask you this. If a wish is granted, you could get any superpower, what would it be? Be invisible. Oh, I love that. The idea of that gives me a lot of thoughts. So yeah, invisible. And it helps. Sometimes you just want to disappear, don't you? There you go, yeah, disappear. Imagine being an invisible bowler. It'll be amazing.
You don't look like that sort of a person who wants to be invisible. That's a very interesting pick. It's in the air. Catch it is a call. 2 under it. Should be out. Should be out. And it's taken. Great catch by Nasir. Dismissing Sahibzada Farhan. Another breakthrough. Well, it's actually the first one, but Amir Jamal gets a breakthrough one more time for his side. He threw it away, Sahibzada Farhan. Just imposing that shot. The length wasn't there. He had no room and no position. That hard length is always hard to put them away straight. They are delighted. They are looking for breakthroughs, and KP are playing in their hands. Farhan has to go. Score 10 runs, KP 31 for 1. KG walks out. That's at number 3 for KP. And wicket taken by AJ. Kamran Ghulam is a mainstay. He's been scoring for KP in this tournament. He's done well. And the others sort of bat around him, depending on what condition or position the team is in. They had a good power play, then he usually comes in. Sometimes if they're struggling, he goes down the order. This had a power hitter, that's a run. In fact, 4. Just using the pace. Haris is now finding his groove. He's now playing sensibly to the merit of the ball. Delicate touch there. Stayed where he was. The stance was perfect to play the shot. Just opened the face of the bat at the last moment to pierce that gap. Yeah, his nerves are gone, the initial nerves. Scored 25 of 10. Now he's looking to press that accelerator. Third man now sent back to the boundary. Oh, nice. That is nicely done. What a beautiful pickup shot. It's all about timing. He's getting in his touch now. Haris, he'll go after everything, but this was a freebie for him. He loves it there. Just the writ doing the talking. No problems, helping you on its way. Whenever you stray down the leg, he'll punish you. Look at that. Follow through. A lot of bottom hand in it. It's not good bowling from Amir. He's conceding runs on both sides of the wicket. Again, there's protection there, yes. And the first time lights are on in the Kingdom Valley National T20. As you know, that it all starts here. 4 overs gone, 42 for 1.
बॉलिंग में तब्दीली की जा रही है और शाम के साए अब यहाँ पर गहरे हो चुके हैं। यही वजह है कि फ्लड लाइट्स भी देखी जा सकती हैं। और दूसरी जानिब हारिस के जलवे भी। इब्तदाई मैचेस में ये हाथ पांव मारते रहे, लेकिन आज बेहतरीन इनिंग्स खेली है और अपने स्ट्रोक दिखा रहे हैं काफी अरसे के बाद। और बहुत ही अच्छा स्ट्राइक रेट है। ये दूसरा इन्होंने छक्का लगाया। बिल्कुल लेंथ बॉल थी। हारिस को नीचे जाके एलिवेशन लेने के लिए मौका मिला, उसका पूरा फायदा उठाया। बॉटम हैंड की मदद से गेंद को उठा दिया और टाइमिंग भी हासिल की। बाउंड्री लाइन के तकरीबन 2-4 कदम बाहर ही गिरी। लेकिन हारिस इस टूर्नामेंट में ज्यादा फॉर्म में नजर नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपने खेलने का अंदाज नहीं बदला। सिर्फ 13 गेंदों पर 38, वही जारहाना इंटेंट, वही क्लैरिटी, बिल्कुल अपने गेम प्लान से मुतालिक उन्हें कोई शकूक व शुबात नहीं है। फिर जोर से खेला, रन आउट हो सकते थे, गेंद हाथ नहीं लगी। इस बार फील्डर को दबाव में लिया। आमिर जमाल थे मिड ऑन पोजीशन पर। गेंद अगर हाथ लग जाती, क्योंकि बहुत तेजी से आई थी, तो शायद हारिस को पहुंचने का मौका ना मिलता फार एंड पे। यही हारिस ने शिनवारी को भी बताया कि बॉल बहुत तेज आई थी, लेकिन ये चांस था रन आउट का। हारिस की बैटिंग में एक चीज अभी भी देखी जा सकती है, थोड़ा सा लगता है वो प्री मेडिटेट करते हैं। वो बॉलर के साथ इस कश्मकश में रहते हैं कि शायद वो बॉलर से एक कदम आगे ही रहे हमेशा, और इसमें कामयाबी का इम्कान आपका 50-50 ही होता है। अभी नए हैं, लेकिन उनका ये जो अंदाज है शायद आगे चल के उनके लिए किसी हद तक मुश्किल का बायस बन सकता है। अभी तक आउट होने वाले इकलौते बैट्समैन साहबजादा फरहान हैं। कैच नासिर ने लिया था, आमिर जमाल ने विकेट हासिल की। गेंद जो है निस्बतन आगे गिरी थी, क्योंकि बाहर निकल रही थी और लेग साइड में खेलने चले गए। तारिक, जो प्री मेडिटेशन की बात हो रही, मॉडर्न डे बैटर्स करते हैं ये आजकल, लेकिन शायद वो फिर उसमें भी कोई ना कोई एरिया अपने जहन में गेम प्लान ए और बी रखते हैं कि अगर यहाँ पे बॉल ना मिली और यहाँ मिली तो 2 ऑप्शन जरूर रखते हैं। इनके खेलने का अपना ही अंदाज है। कामरान ये हाई रिस्क क्रिकेट खेलते नहीं है। पावर प्ले में भी आते हैं तो कोशिश करते हैं शुरू में स्ट्राइक से हट जाएं, और जो सेट बैट्समैन खेल रहा है हारिस की तरह, या लाहौर कलंदर्स में जैसे फ़खर जमान इनके साथ खेलते हैं, उनको इनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा गेंदें खेलें, लेकिन कई बार ये खुद भी हमला कर देते हैं बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर। मोहम्मद हारिस सेंट्रल पंजाब के खिलाफ 10 रन बना सके थे। नॉर्दर्न के खिलाफ इन्होंने 33 रन की इनिंग्स खेली थी रावलपिंडी में, और ये इनका बेहतरीन स्कोर है। 39 से पहले 37 था। ऑर्डर बैटिंग करने के लिए स्टैट से मुतमईन नहीं होंगे हारिस। टीम मैनेजमेंट ने बिल्कुल उन पर एतमाद किया हुआ है। फुल शॉट खेला, बल्ला ऊपर से नीचे लाए, और आजकल बैट्समैनों के हाथ में बल्ला होता है इस T20 क्रिकेट में, तो आपको लगता है कि कई खेल हो रहे हैं। कई बार लगता है कि ये बेसबॉल का क्लब है, कई बार गोल्फ क्लब लगता है, कई बार रैकेट लगता है। तारिक भाई, क्योंकि बॉल स्ट्राइकिंग के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस बैटर्स के पास आ गए हैं और इसमें वो कतराते नहीं हैं। ग्राउंड के किसी भी हिस्से में किसी भी गेंद को खेलने की सलाहियत रखते हैं। इसी को 360 भी कहते हैं। जो बैटिंग और बॉल स्ट्राइकिंग है ये काफी इवॉल्व हुई है पिछले कुछ सालों से। इस पे बात करेंगे। 5 के बाद 51 पर 1।
गेंदों पर 40 बनाए हारिस ने। जो बात कर रहे थे, अब पहले ऐसा कम ही होता था कि बैकफुट पर सीधे बल्ले से आप कवर और एक्स्ट्रा कवर में छक्का लगा दें, या फिर लॉन्ग ऑन या बॉलर के सर के ऊपर से जो है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बैट के साथ आप जो है छक्का लगा लें। लेकिन आजकल ये शॉट्स देखने को मिलती हैं और उसके लिए लेंथ और हाइट की भी कोई कदर बैट्समैन जो है वो इसमें फ़र्क नहीं करते। शॉर्ट पिच डिलीवरी हो, टेनिस के से अंदाज में ही खेल लेते हैं। यहाँ पर आज कदरे बेहतर मौसम है। यहाँ परिंदे जो हैं वो पानी की तलाश में रहते हैं। अक्सर जहाँ से ये पट्टी शुरू होती है, ये जनूब की पट्टी, और स्वीप करने के लिए गए, लेकिन गेंद खासी आगे गिरी हुई थी, लेंथ नहीं थी स्वीप करने के लिए, और गेंद डिप करती हुई भी आई। मेहरान मुमताज की अच्छी गेंद थी। इस बार तकरीबन चकमा दे चले थे सेट हारिस को। देखिए बॉल हवा में जो है थोड़ा सा कर्व हुई बैटर से हुए और इसीलिए वो शॉट में डिफीट हो गए। मेहरान भी काफ़ी बासलाहियत खिलाड़ी हैं। टूर्नामेंट में उनके आदाद शुमार इतने बेहतर ना हो, मुख्तलिफ मौके पर वो ज़रूर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहे हैं। फिर हवा में बॉल डिप करती हुई बिल्कुल तकरीबन यॉर्कर हो गई। ये अच्छे आसार हैं मेहरान मुमताज। और शानदार डिलीवरी, टर्न हुई और विकेट कीपर ने काम तमाम कर दिया। हारिस जल्दी अपनी क्रीज से निकल आए थे, वार करना चाहते थे, लेकिन उनका खाली गया और मेहरान मुमताज ने उनकी विकेट हासिल कर ली। बड़ी शानदार बॉलिंग, ये देखिए आमादा किया बैट्समैन को बाहर निकलने पर। बिल्कुल क्लासिकल लेफ्ट आर्म स्पिनर का डिसमिसल था। इस बॉल में फ्लाइट भी थी, ड्रिफ्ट मिली, अंदर की तरफ एंगल बनाते हुए पिच करने के बाद बाहर को निकली और हारिस दूर दूर रह गए गेंद से। रोहेल नजीर ने मौके का फायदा उठाया। अच्छी इनिंग्स खेली हारिस ने। केपी 53 पर 2। खतरनाक हारिस से छुटकारा मिला नॉर्दर्न को मेहरान मुमताज के जरिए, और इसरारुल्लाह बाएं हाथ से खेलने वाले बैट्समैन को भेजा गया है और ये चाल चली है इसलिए कि लेफ्ट आर्म स्पिनर यहाँ पर आ गए हैं बॉलिंग करने के लिए, तो उनके खिलाफ ये हरबा इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेग साइड में खेलकर 1 रन हासिल किया। जो अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो कर सकता है बाएं हाथ के बैट्समैन को भी बॉलिंग, और ये देखिए बहुत ही आला डिलीवरी थी, सीम पर लगी, उसके बाद टर्न हुई। इन शॉट क्या खेल गए हारिस, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलना चाहते थे। शॉट जो बनता था वो कवर और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बनता था, अगर आपने अटैक भी करना था। मेहरान की दाद देनी होगी। इस फॉर्मेट में भी झिझक नहीं रहे बॉल को हवा में फेंकने से और बैटर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि आप आएं और अगर आप हिट करना चाहें तो जरूर क्रीज छोड़ें और अटैक करें। यहाँ इस पिच में मदद मौजूद है, थोड़ी सी पकड़ मिल रही है मेहरान मुमताज को, इससे मुश्किल पेश आई है अब तक खैबर पख्तूनख्वा के बैट्समैनों को उनसे निगोशिएट करने में। अपने पहले ओवर में सिर्फ 4 रन दिए और एक मैदान भी मार लिया मेहरान ने 55 पर 2 6 ओवर्स के बाद।
अंपायर ज़मीर हैदर ने इशारा दे दिया है कि 6 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। यहाँ अब इस सूरत हाल से कामरान गुलाम जो हैं वो निस्बतन ज़्यादा खुश होंगे, उनको आसानी के साथ रन्स मिल सकते हैं। लेग साइड में सिर्फ एक ही फील्डर सर्कल के अंदर मौजूद है, मोहम्मद हुरैरा। आप उनके दाएं बाएं खेलकर रन बना सकते हैं। ऑफ साइड में भी कामरान गुलाम ऐसा करते हैं। अच्छी थ्रो नासिर नवाज की, लेकिन पहुंच गए थे। जी, पावर प्ले के बाद बिल्कुल एक नया फेज शुरू होता है इनिंग्स का। पावर प्ले अच्छा रहा खैबर पख्तूनख्वा के लिए। हारिस ने उसी एग्रेसिव इंटेंट से आगाज किया, आड़े हाथों लिया जमान को। शॉर्ट पिच बॉलिंग पर भी खतरा लेने पर, मोल लेने पर आमादा थे। यहाँ साहबजादा फरहान की विकेट का नुकसान हुआ। अच्छा पेस को यूज किया, ज्यादातर ताकत का इस्तेमाल किया। यहाँ पर चूक गए मेहरान मुमताज के हाथों। इस एक विकेट के नुकसान से कुछ गेम में वापस आई है नॉर्दर्न की टीम, क्योंकि ये पावर प्ले ज्यादातर खैबर पख्तूनख्वा के नाम रहा। खैबर पख्तूनख्वा की जो अप्रोच है उसकी भी दाद मिलनी चाहिए। हालांकि रन ज्यादा नहीं है, 153 का हदफ है। उनके बॉलर्स हैं अपना काम कर चुके हैं खुश उसलूबी से, लेकिन फिर भी जो 50 रन का हदफ है उन्होंने अबूर किया है पहले 6 ओवर्स में। किंगडम वैली के ऑफिशियल पेज पर आप जाइए, आप इनामात जीत सकते हैं। एक्साइटिंग प्राइजेस आपके मुंतज़िर हैं, अगले विनर आप भी हो सकते हैं, फायदा उठाइए। यहाँ तो मैं जिक्र कर रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा की उनकी अप्रोच जो है वो यकसा रहती है। सामने हदफ कोई भी हो, आप अपनी आदतें बिगाड़ते नहीं हैं और ना ही आप खुद को ज़्यादा कंफर्ट जोन के आदी करते हैं कि अगर आज हदफ कम है तो हदफ को देखकर आप अपनी हिकमत अमली तब्दील कीजिए। आपकी सोच वही रहनी चाहिए, खा आपके सामने 153 का हदफ हो, खा 185 का हदफ हो। और पिछले मैच में इन्हें शिकस्त हुई थी 194 के ताकुब में, लेकिन उनका मेथड ज्यादातर सेम ही रहता है और उनकी कंसिस्टेंसी की वजह भी यही है। पिछले 4 साल में डोमेस्टिक क्रिकेट में इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही कंसिस्टेंट रही है। प्लेयर्स के आने जाने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और टॉस पे मैंने खालिद उस्मान से कोई एक वजह पूछी तो उन्होंने यही कहा, वो जेल होकर खेलते हैं। इसका मतलब है कि टीम प्लान हमेशा कंसिस्टेंट रहता है और वही तरजीह रहती है खिलाड़ियों की। और एक और खास बात यह है कि इनके जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं वो आपको बहुत कम डॉट बॉल्स खेलते हुए नजर आएंगे। इनके पास आखिर में बड़े कमाल के स्ट्राइकर्स भी मौजूद हैं। छक्के लगाकर ये देखिए मैचेस का उन्होंने 5सा पलटा है। सेंट्रल पंजाब की टीम को उन्होंने कल शिकस्त जरूर उनके हाथों खाई थी, लेकिन उससे पहले हराया था 18 रन से। नॉर्दर्न को उन्होंने 2 रन से हराया था। ये बड़ा दिलचस्प मैच हुआ था रावलपिंडी में 1 अगस्त को। उसके बाद मजीद 3 मैचेस जीतने का एजाज़ हासिल किया। इस टीम ने अब तक 10 पॉइंट्स हासिल किए हैं, सबसे ज़्यादा, और तकरीबन इनका एक कदम है सेमीफाइनल में पहले ही। एक ही मैच इन्होंने शिकस्त खाई इस टूर्नामेंट में और उसके बाद भी लगता है ऐसा है कि जैसे आज वो जिस इंटेंट के साथ आए बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबों में, उस शिकस्त का उन्हें काफी मलाल हुआ। ये जाहिर किया आज उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से। लाइट्स ऑन है यहाँ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में और आज पहला नाइट मैच भी होगा इस किंगडम वैली नेशनल T20 कप का। आज के दिन का दूसरा मैच यहाँ इसलिए ये कोई देखे जा सकते हैं, परस्तार भी मैदान में ये खाल खाल आपको नजर आते हैं। यहाँ पर जो मुख्तलिफ एम्प्लॉयर्स कायम हैं वहाँ पर, और जल्दी करनी पड़ी, पहुँच गए। दूसरा रन लेना चाहते थे, ख्वाहिश जाहिर की इसरारुल्लाह ने, लेकिन स्क्वायर लेग से आ गए थे जमान खान। तो क्योंकि इस वक्त फ्लड लाइट्स की रोशनी देखी जा सकती है तो लोग जो हैं वो रुख करेंगे
स्टेडियम का ये अच्छे आसार लग रहे हैं। आज पहला ये जो डे नाइट मैच खेला जा रहा है, डे नाइट इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि मरहला शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि मैदान में भी जो रोशनी है वो उसके रंग अब मुख्तलिफ नजर आने लगे। बिल्कुल वो जो सख्त तेज धूप की जो रोशनी थी, इसके बाद ये आर्टिफिशियल लाइट्स की मध्यम सी जो रोशनी है वो इतनी ज़्यादा तमाज़त इसमें नहीं है जितनी दिन की धूप में थी। खूबसूरत मंजर मुल्तान का सूरज गुरूब होते हुए। बहुत अच्छे शाबाश। यहाँ बड़ा खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम है। ये पाकिस्तान में ये सबसे जदीद स्टेडियम है। ये इसी सदी में बनाया गया था, इस मिलेनियम के बिल्कुल शुरू में, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जनरल तौकीर ज़िया साहब थे। और ये बिल्कुल जिस तरह जनूबी अफ्रीका में आपको स्टेडियम नज़र आते हैं, उसी तर्ज पर यहाँ पर बड़ी जदीद सहूलियात हैं। मीडिया सेंटर है, ये आप देख सकते हैं। ये सामने मीडिया सेंटर की इमारत है और यहाँ पर तमाशाइयों के बैठने के लिए, उनकी सहूलत के लिए छत भी डाल दी गई है इनक्लोजर्स के ऊपर। मेन पवेलियन में भी अच्छी सहूलियात हैं। गेंद गई हवा में और डाइव करके इसे हाथों हाथ ले लिया। शॉट खेलते हुए तकरीबन रुक गए थे और आउट हो गए यहाँ पर इसरारुल्लाह। तो विकेट हासिल की। एक और बड़ी आला बॉलिंग की थी अपने पहले ओवर में भी, इस बार क्रीज से बाहर निकलते हुए ये देखिए फ्लिक कर दिया सीधा हाथों में। मेहरान मुमताज ये आज रुकने में नहीं आ रहे। वापस जाते हुए इसरारुल्लाह जरूर सोच रहे होंगे कि शायद वो अपना शॉट खेल ही जाते तो ज्यादा बेहतर था। एक और नाकामी उनके हाथ आई इस टूर्नामेंट में। 3 पर वापस हुए केपी 61 पर 3। आदिल अमीन नए आने वाले खिलाड़ी, 31 साल इनकी उम्र है, काफी तजर्बेकार हैं। 26 की एवरेज, 114 का स्ट्राइक रेट। चंद बरस में ज्यादा स्ट्राइक रेट से खेले हैं। शायद कैरियर के स्टार्ट में इस तरह का स्ट्राइक रेट नहीं था। सिर्फ एक ही 50 है निस सेंचुरी इनके खाते पर, लेकिन जो अच्छा पावर प्ले मिला उसकी वजह से रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी ज्यादा नहीं है केपी के लिए। लेकिन विकेटें गिरने की वजह से कोई भी रन चेज डिरेल हो जाती है और लग रहा है इस वक्त यहाँ मेहरान मुमताज ने अच्छी वेरिएशन के साथ आज बॉल की है। ये थोड़ा सा खिंचा हुआ बॉल था, लेकिन बॉल में पेस नहीं थी ज्यादा और डिसीव कर दिया इसरारुल्लाह को, गेंद तक नहीं पहुंच सके। कामरान गुलाम की विकेट की अहमियत अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है इस टूर्नामेंट में। अपनी रेपुटेशन के मुताबिक ज्यादा रन उन्होंने भी नहीं बनाए। ये देखिए
नासिर नवाज ने भी ऐसा लगता है कि मिस जज किया, लेकिन बिल्कुल गेंद पर नजर रखी जिसकी वजह से एडजस्ट कर गए। चल 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 राम से इजीली राम से 8 के बाद 64 पर 3। $64 for 3 at the moment after 8. Believe it or not, in the last stint, Kamran Ghulam had come out to bat and he's batting at 7 right now. The runs are not coming easy here. It's just that too many runs were given in the first 3 overs by Northern. They were going 10 runs and over, or leaking 10 runs and over. Well, if they keep batting like this, the sun will set down on them as well. Oh, there's a nick. Yeah, I'm telling you, the sun is setting down. Now you choose which side you want to be on. 65 for 4. That was a wide ball, a bad ball. But Kamran Ghulam has chased it down and made sure that he gets a bit of bat on that. Oh, that's unlucky. Real unlucky for Kamran Ghulam. It is sort of a delivery that you automatically go at. Unfortunately for Kamran Ghulam and KP that he did get a nick on it. There was no harm. No problems for umpire giving him out. 7 runs, a big moment in the game. 65 for 4. Mohammad Sarwar is the new batter in, replacing Kamran Ghulam. 65 for 4. You don't want to dig that hole that you find yourself tough to get out of. And at the same time, Northern needs to pull their socks up. That's a wicket that they've got on sheer luck. It was a bad white ball and would have been put away for a boundary. So when luck is favoring you, you've got to just do that extra bit. Wide given. That's what I'm talking about. Ball with purpose. They've got a different energy, this Northern side, after getting that big wicket of Kamran Ghulam. Just reminds me of what happened to Babar Azam last night. It was just the difference with that. He played it in the air and Kamran Ghulam just nicked it. It was a similar sort of delivery. Batter has to go after it. It's just in their nature. Whenever the ball is delivered on the leg side, they have to go at it. They don't have to really worry. Because you're getting runs like that. Lucky that they then another substitute fielder, Salman Irshad, in. Yeah, it was a misfield there. They tried to take a extra run, but they couldn't. It's a race. Look at the white one in between. Which one? It's not on the screen. There you see.
Which screen are you looking at? KB don't have to panic at the moment. They've got two good batters on strike. They're settled. They're happy. They're at peace. Got the best seats in the house there. Some of them on the Inzamam ul Haq enclosure, some of them on your brother's enclosure. The comparison of that dismissal of Kamran Ghulam and Babar Azam, very similar in the sense that they were bad and wide balls, but Babar had hit it well. And it was lucky that the fielder at short final caught that. I mean, he had a good response time. The timing of the jump was good. Unlucky that he just ended up finding the fielder. But this one, why I don't find it very similar is because this was a very half-hearted shot attempt from Kamran Ghulam. Oh, he was just in follow through. Otherwise, he would have probably got a finger to it. Nevertheless, both of them were wickets. 9 gone, 69 for 4. They're called Khusas, and they're known to be the best here in Pakistan and Multan, and Ali agrees, but he won't talk about them. I don't know why, but he likes them. He's chosen a few. He's going to take them home and give them to the family. Men also wear them, don't they? I mean, I've not seen any men. They're all ladies. Look at the comparison of scoring. The red ones are the power play. Wickets have been falling for Northern throughout those white dots. And so is the case with KP. 84 of 66, it's gettable. Oh, that was an edge. Going hard at the ball. How well this youngster has bowled. I think he's the sole reason that Northern has made a comeback in this game. 2 wickets for him already, Mehran Mumtaz. They can afford KP at the moment. Just few quiet overs because they were off to a great start by Haris. And this one is the good part is he's very brave. He likes to give the air to the ball. The way he took the wicket of Haris, that was a brave delivery. It's not easy at this age. Yes, beautiful. It's getting turned, Mehran Mumtaz. He was in the air for a while. Run out chance. Direct hit. Come on. Oh, that was very, very close. I think the fielder took a fraction of a moment to decide which end to throw at Shinwari. And that allowed them to go through with a single. Yeah, it was Server who pushed Adil Amin to go for that run. He went straight to the fielder. Have a look at Server. He's not stopping for anything. Look at where Mehran Mumtaz is. Should be behind the stumps. That was what Shinwari was also complaining about. What are you doing in front of the stumps? Should be behind the stumps, because then you need an extra fraction of a moment to collect the ball, turn around, hit the bails. Another single. 73 for 4. Have a look at that again, that run out chance. Just Mehran Mumtaz and his positions. He wants the ball to be thrown at him, but where is he standing? They wanted to collect it right in front of the wickets. But yeah, as you said, the better idea would have been on the back of it. Yes, that's what Shinwari is suggesting. Piche jao.
Amir Jamal. 1 wicket, 11 runs he gave away in his first over. It's been such a great tournament for Amir Jamal for Northern, with the bat, with the ball, with catching. That's a brilliant one. He's got something in him, that he's nippy. Amir Jamal. Sohail Tanveer is in a spot of bother. He's got an injury on his hand, I think, from earlier on. And when the ball hit him in the previous over, that just aggravated it. He's catching the ball with one hand. It's the thigh. And that's his left hand, that's his bowling hand, which is some issue there. He's not using it at all, even to catch the ball when the fielders throw it at him. Well, you got to give it to him. It's not easy at this age, competing with the boys of half of his age. And he's done a good job. Look at that. Yeah, he showed concern there. 4. That's really timed well. Put bat onto pace, and he's earned himself that boundary. Timing and placement, both excellent by Adil Amin. Look at that. That rushed towards that fine leg boundary. Top shot into the smiling Babar Azam. .76 of 57. You would think the equation is little tilted towards Northern at the moment, because 1 wicket here will definitely put them in the driving seat. Northern. There is bounce on the surface. You can tell with the carry as well. This is not like a bumper, but it's just a carry. It's like a tennis ball at times. Have a look at that. It's pitched. Look at the rise. He's grabbing it around the chest, the wicket keeper. Kicked on. And that's the bounce that Ehsanullah exploited in the first inning. He had better pace. Amir Jamal a little less in pace, but he's doing a good job for his team. 76 of 56. It's getting close. There's a fielder now going at deep mid-wicket, and fielder at fine leg is coming inside the circle. So the plan is clear. They're going to go for short bowling. They can get 2. They can get 2 easily, and they will. Again, the pace and bounce of the pitch. Adil Amin just punching it off to the back foot. Got those 2 runs. Important inning. Adil Amin had already played a good inning in this tournament. Single-handedly won the match. This is a different situation, different opponents, under lights, different pitch. He'll have to bring his A game. Have a look at that punch. The ball raced it towards that extra cover boundary. Good work done by youngster Mehran Mumtaz. Should look to get 2. Now they will settle down for 1. Good cricket. 11 gone, 80 for 4. We know him. Always on the phone. Always. Fellow commentator Shah Faisal. Got a business. That's a fan moment. He's watching himself on the big screen. He's so happy. While others are working, he's chilling outside.
Oh, catch it is the call, but it's just above that field. Living dangerously, that boundary added. So that's going to hurt further. Northern doesn't want that. Starting the over with a boundary, but he's asking questions, Mehran. Quick hands. Saved Adil Amin. Look at that, he wanted to go over extra cover. Lucky, very lucky. Yeah, that's disappointment. Definitely showing on Mehran Mumtaz's face, because they know that this is a very important wicket. Direct hit, direct hit. Again, an opportunity. Same fielder. This is good cricket. Very good cricket by Adil Amin. Soft hands. Although it went straight to the fielder, but he knew that he has played it softly. He would have made it easily. Mehran is bowling well, looking for that support. He's got 2 for 18 in his last over right now. You just probably give respect, see it off. Turn bounce. It's a good spell. He's getting spin, he's getting bounce. It would be interesting to see how Yasir Shah will exploit this pitch in the next game against Sindh. We've got a very good game in our hands. The next one, Balochistan taking on Sindh. Alongside Kashif Bhatti, both can do it. How about Abrar? One more ball in the over will complete his quota, Mehran. Oh, that's a shout. That's a good shout. Yes, on the last ball, he gets another wicket. What a spell this is. 3 for 20 in his 4 overs. Brilliantly done. He was asking questions, trying to sweep that. Ends up with having the thigh in front of the stumps. Fantastic way to end your spell. Have a look at that. You were searching for wicket. Oh, that's out. That is definitely out. Although he suggested that it might have kissed the glove. Somebody jinxed him. 87 for 5. देखिए मौसम के तेवर जो हैं वो थोड़े थोड़े बदल रहे हैं. सूरज गुरूब होने को है, दिन अब बड़े होने लगे और यहाँ पर 19 रन आदिल ने बनाए हैं और उनकी कोशिश यही होगी खालिद उस्मान के साथ मिलकर इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इस टूर्नामेंट में जो इनका सूरज जो है जो सवा नेज़े पे रहा है वो वहीं रहे, डूब न जाए. इनके भी तेवर बदलते नजर आ रहे हैं. नॉर्दर्न बहुत उम्दा बॉलिंग की है, शुरू में रन जरूर दिए लेकिन फील्डिंग बहुत अच्छी की. मेहरान मुमताज इस टूर्नामेंट का बेहतरीन स्पेल करते हुए नजर आ रहे हैं और गिरफ्त मजबूत हो रही है थोड़ी नॉर्दर्न की इस मैच पे. एक अच्छे आगाज के बाद पार्टनरशिप इनको मिली नहीं है. 53 रन पर एक ही विकेट गिरी थी और उसके बाद जब हारिस गए तो दबाव आना शुरू हुआ. तो यहाँ पर दूसरे रन की कोशिश, डायरेक्ट थ्रो की जरूरत थी और कोशिश अच्छी की जमान खान ने.
थ्रो करने की, लेकिन उतनी अच्छी दौड़ भी लगाई। खालिद उस्मान डेंजर एंड पर आ रहे थे। नासिर नवाज थे थ्रो के साथ, रिस्की रन था ये, लेकिन क्योंकि कमिट कर लिया था, डेंजर एंड उनका था। अगर ये डायरेक्ट हिट लगती तो एक और बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाता। बहुत करीबी मामला तो नहीं मेरा ख्याल है, लग जाती तो इनको सीधा वापस पेविलियन जाना पड़ता। सुहेल तनवीर के लिए मिड ऑफ पर शिनवारी दायरे में, एक्स्ट्रा कवर पॉइंट है। ऑफ साइड में फाइनल के फील्डर भी दायरे में और नो बॉल कर दी। आज तेज बॉलर्स जो हैं मुसलसल ये गलती करते रहे। सुहेल तनवीर ने बहुत ज़्यादा नो बॉल्स की हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। जाहिर इन जैसे सीनियर बॉलर से तवक्को की जाती है कि दूसरों के लिए एक मिसाल बनेंगे। ज़्यादातर जूनियर बॉलर्स इर्द गिर्द इनके खेल रहे हैं। ये 4 नो बॉल्स कर चुके हैं सुहेल तनवीर इस टूर्नामेंट में। और खसूसी इस मरहले पे जब प्रेशर जो है वो केपी के ऊपर बिल्ड हो रहा है, अगर आप इस तरह के रन दे देंगे तो फिर ये बहुत कम मार्जिन रह जाएगा इनके पास, नॉर्दर्न के पास, कि ये टोटल डिफेंड कर पाए। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी रही है, बाउंड्रीज भी आ जा रही हैं। विकेटों का कॉलम जो है वो थोड़ा कंसर्निंग है। अब फ्री हिट पे क्या रन बना पाएंगे? फ्री हिट्स पर हमने देखा है कि इन दिनों बाउंड्रीज कम लगती, क्या आदिल अमीन लगा सकते हैं तो ये फ्री हिट रहेगी, क्योंकि ये वाइड हो गई। ये फ्री हिट वाइड भी ये पहली बार नॉर्दर्न ने नहीं की है। आमिर जमाल ने रावलपिंडी में ऐसा किया था। और अब आप देख सकते हैं कि अगर इस गेंद पर छक्का लग जाता है तो एक ही गेंद पर 8 रन बन जाएंगे। कोशिश ये होती है बॉलर्स की कि बल्ले से दूर रखा जाए गेंद को कम पेस के साथ, लेकिन इस तरह अगर वाइड में वो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है तो फिर डबल मसला हो जाता है। सुहेल तनवीर जो है यॉर्कर करने की कोशिश करेंगे या फिर स्लो डिलीवरी करेंगे। ऑफ स्टंप के बाद दूर भी कर सकते हैं, थर्ड मैन के फील्डर पीछे। यॉर्कर किया। ज्यादा फायदा उठा नहीं पाए, फ्री हिट का एक ही रन बना। खालिद उस्मान आदिल दोनों बल्लेबाजी बहुत पुरएतमाद तरीके से करते हैं। तो मुश्किल होनी नहीं चाहिए, लेकिन बस अगर यहाँ पे विकेट गिरती है तो फिर ज्यादा प्रेशर केपी पे आ जाएगा। कप्तान को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। यहाँ इसके बाद इनके बॉलर्स बाकी रह जाएंगे, एहसानुल्लाह, इमरान खान सीनियर और जूनियर, माज खान। इसलिए ये जो दोनों खिलाड़ी हैं अब इनको बड़ी जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा। 46 गेंदों में 61 रन ये मुमकिन है। खालिद उस्मान इस तरह के हालात से निपटना जानते हैं। आदिल अमीन एक ऐसे बैट्समैन हैं जो किसी भी वक्त वो अपनी जो हिटिंग सलाहियतें हैं उनका इजहार कर सकते हैं। चौका छक्का लगाना ये कभी भी उनका मसला रहा नहीं। बड़ा ग्राउंड है, स्क्वायर भी बड़ा है, यहाँ पे आराम से सिंगल डबल्स आ सकते हैं। और बाउंड्री ऑप्शन जरूर नॉर्दर्न के देंगे बॉलर्स, वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे मुकर्ररा रन रेट जो है वो 8 है और इनका भी फिलहाल 7.4 है। ज़्यादा फर्क नहीं है। थोड़ी सी समझदारी से अगर ये खेलें तो ये आराम से चेस हो सकता है। कोई मुश्किल पेश नहीं आई क्योंकि शॉर्ट फाइन लेग पर मेहरान मुमताज वाइड खड़े हुए थे। सुहेल तनवीर ने ये बात ज़रूर कहना होगी कि अच्छा मुकाबला किया। कम स्कोर था डिफेंड करने को, लेकिन उनने विकेटें लेने की कोशिश की है। उनके तमाम ही बॉलर्स ने, उनके फील्डर्स भी अच्छी जगहों पर खड़े हुए नज़र आए हैं। टीम में एक एनर्जी दिखाई दी है। जीशान ने आज बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली थी। अपनी टीम को उन्हें बिल्कुल मुकाबले से बाहर नहीं होने दिया। निस्फ सेंचुरी स्कोर की जीशान मलिक ने। ये देखिए अभी भी जो फील्डर हैं सर्कल में ये एक आगे खड़े हुए हैं 4-4, 5-5 गज, ताकि आसानी के साथ रन ना बना सकें। खालिद यहाँ इस पिच में आज पेस ज्यादा है। पहले जो 2 दिन थे रफ्तार कम थी। कई बार देखा कि गेंद जो है बल्ला गेंद पर लगने की बजाय गेंद बल्ले पर लगती।
आज हल्की सी लाइव ग्रास जरूर मौजूद थी पिच पे। जब सुबह पिच को मैं देखने गई हूँ, वहाँ पे थोड़ी हल्की लाइव ग्रास नजर आ रही थी। बाउंस अच्छा है, आज थोड़ा निकल रहा है बॉल, और वो दोनों के लिए बेहतर हो सकता है। बॉलर्स को मदद जरूर मिलती है, लेकिन अगर कोई टाइम करने वाला बल्लेबाज हो तो उसको शॉट्स खेलना आसान होता है, क्योंकि थोड़ा सा हमें देखने में आ रहा था पिछले मैचेस में कि इतने खुले रन्स बन नहीं पा रहे थे। अभी तक महंगे रहे हैं सोहेल तनवीर, उन्हें ये ओवर बेहतर खत्म करना होगा। ऑफ साइड में सरका कर एक और आसान रन बनाया आदिल अमीन ने, वही अगले ओवर में भी सामना करेंगे। 96 पर 5। हवा में हल्की हल्की गर्द नजर आ रही है, इससे उसके आसार आपको नजर आ रहे होंगे इस तस्वीर से भी। अरशद इकबाल आज नहीं खेले, उन्होंने बिब पहनी हुई है जो रिजर्व खिलाड़ियों को इन दिनों दी जाती है। आउटफील्ड पर आप ये पहने बगैर जा नहीं सकते। आमिर जमाल अब बॉलिंग करेंगे। ये अच्छा मौका है मजीद 2 पॉइंट्स हासिल करने का नॉर्दर्न के लिए। अच्छी बॉलिंग की है, सिर्फ 18 रन दिए थे, तीसरे ओवर पे आ गए आमिर जमाल। DICC डेफ इंटरनेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप चैंपियन ट्रॉफी जो 2022 के लिए मुकद्दर हुई है, 1 अक्टूबर से इसका आगाज़ होगा, और जितने भी डेफ क्रिकेटर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपना टैलेंट दिखाने का। एक बार फिर गेंद तवक्को से ज्यादा तेज आ गई खालिद उस्मान के। डेफ क्रिकेट की बात तो बहुत हो गई है, पाकिस्तान विमेन क्रिकेट की क्या मसरूफियात हैं मरीना, बताइए। एशिया कप की तैयारी शुरू है उनकी, पहले अक्टूबर से एशिया कप जो है वो बांग्लादेश में होने को जा रहा है, और कुछ हलचल ज़रूर मची हुई है। परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं रही, कुछ तब्दीलियाँ भी देखने में आ सकती है हमें नज़र, लेकिन वो एक अच्छा मुकाबला होगा एशिया कप में। जिस तरह बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें बेहतर परफॉर्म करना शुरू हो गई हैं। आयरलैंड टीम के मुतालिक भी इत्तलात हैं कि वो पाकिस्तान का दौरा करने वाली है। इस साथ श्रीलंका की टीम भी कराची आई थी मौसम गर्मा में, उसने भी फिर गेंद हुरैरा के पास गई। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, गेंदों और रन्स के दरमियान जो फर्क है वो बढ़ने लगा है। 8.68 रन बनाने की औसत है, लेकिन जब तक ये 10 से कम रहेगी तब तक कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा मुश्किल नॉर्दर्न के लिए है, उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी विकेटें हासिल करने के लिए, क्योंकि रन्स इतना ज़्यादा फासला है नहीं रन्स और गेंदों में, और ये दोनों बहुत पुरएतमाद बल्लेबाज हैं। ख्याल यही है कि शॉर्ट ऑफ द लेंथ करें, ज़्यादा बैकफुट पे इनको खिलाएं। 14 गेंदों से कोई बाउंड्री नहीं मिली है खैबर पख्तूनख्वा को, ये वाइड हो जाएगी। इस बार कोशिश की थी बाउंड्री लगाने की, सोहेल तनवीर दायरे में थे, बाउंसर करने की कोशिश की लेकिन ऑफलाइन हो गए। आमिर शॉर्ट गेंद करने के शौकीन है आमिर जमाल, लेकिन अब हम देखते हैं कभी कभार यॉर्कर अच्छा कर लेते हैं, ऑफ कटर्स की भी कोशिश करते रहे हैं।
पिंडी में इनकी वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिली थी, वहाँ इतना आसान था नहीं स्ट्रोक प्ले। यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा मेहनत दरकार है बॉलर्स की जानिब से, क्योंकि अच्छा सरफेस है। अच्छा मिक्सअप करते हैं, हम देखते हैं कि इस बार यॉर्कर कर पाएंगे, आगे पिच करेंगे या नहीं। मरीना, पिंडी में जो वेरिएशंस का इस्तेमाल था फास्ट बॉलर्स की तरफ से, वो यहाँ किस तरह मुख्तलिफ कर सकते हैं, किस लेंथ पर कर सकते हैं, कितना मुख्तलिफ रावलपिंडी से मुल्तान में? देखिए यहाँ पे डेफिनेटली बॉल बहुत अच्छा आ रहा है, बाउंस ज़्यादा है, यहाँ पे स्ट्रोक्स खेलना फिर भी आसान है, लेकिन वेरिएशन के लिए जो आपकी अगर स्लोअर वन आप कराते हैं या कटर कराते हैं, एक तो विद इन सरफेस करवाना पड़ेगा। हार्ड लेंथ फिर भी मैं कहूँगी विद इन स्टम्प्स कारआमद साबित रहती है, क्योंकि एक स्क्वायर बड़ा है, शॉर्ट ऑफ लेंथ को खींचना स्लोप बॉल पे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और यही हमें देखने को मिला है कि ज़्यादातर डिसमिसल्स इसी तर्ज की गेंदों पे हुए हैं यहाँ पे। और इस बार खेल चले थे इस गेंद को अपनी स्टंप्स के ऊपर। खालिद उस्मान की बैटिंग पार्टनर आदिल, बेहतर ओवर आमिर जमाल का। ये देखिए हार्ड लेंथ को उन्हें हिट किया, ऑफ साइड में खेलने चले गए और किस्मत ने यावरी की, लेकिन अच्छा बैकअप किया खालिद ने। वो पहुंच गए डेंजर एंड पर। 14 ओवर्स और 100 रन खैबर पख्तूनख्वा के मुकम्मल हुए 5 विकेट। पहली 50 केपी ने 28 बॉलों में मुकम्मल की थी और 56 डिलीवरीज लग गई इनको दूसरी 50 मुकम्मल करने में। जो रन रेट है वो काफ़ी नीचे आया, उसकी बड़ी वजह विकेटें गिरती रहीं केपी की। शिनवारी को वापस बुलाया गया। और ये गेंद रुकी, यहाँ पर ऑफ करने की कोशिश की, स्ट्रोक पहले खेल लिया लेग साइड में, क्योंकि ये पहला फ्लड लाइट मैच भी है और ये एक ऐसा वक्त है जब दिन डूब रहा है और फ्लड लाइट्स रोशन है, तो कभी कभार ये जो टॉयलाइट का वक्त होता है, ऐसे में बैटिंग मुश्किल हो जाती है, तो गेंद आपको उतनी साफ नजर भी नहीं आती। कई बार हमने देखा है कि दिन के वक्त भी ये जो पिच की जिस तरह की रंगत है, और जब गेंद की रंगत थोड़ी सी बिगड़ जाती है तो बिल्कुल ही एक यकसानियत हो जाती है। यहाँ काफ़ी आगे निकल गए थे, अगर थ्रो लग जाती तो काम तमाम था, और ऐसा इस इनिंग्स में पहली बार नहीं हुआ। रन आउट के मौके ज़ाया किए हैं नॉर्थन ने। ये एक और बड़ा मौका था, खालिद उस्मान खेलते ही निकल आए थे और थोड़ा सा बैकअप ज़रूर किया था आदिल ने, लेकिन आधे रास्ते से वापस भेजा, और ये अगर एक बार फिर विकेटों में लगता तो रन आउट हो सकता था, लेकिन तकरीबन 3 दफ़ा नॉर्दर्न ने अपने बड़े रन आउट्स मिस किए हैं। और उसकी वजह यह है कि ये आसानी के साथ चौके नहीं मिल रहे, तो ये दोनों खिलाड़ी जो हैं कोशिश करते हैं कि 1 रन लें या 1 को 2 में तब्दील किया जाए। सोहेल तनवीर लेग साइड में, तो ये मौका है, अगर ये लेग साइड में सामने खेलते हैं तो ये रन हासिल कर सकते हैं। बहुत लंबे रन अप से आ रहे हैं उस्मान शिनवारी। ऑफ साइड में हवा में गई, ज्यादा दूर नहीं थी पॉइंट से और ना ही थर्ड मैन से, लेकिन फिर भी 4 रन मिल गए। खालिद उस्मान ने रफ्तार का इस्तेमाल किया, बर वक्त उन्होंने अपने बल्ले का फेस ओपन किया और अशज जरूरत थी। 18 गेंदों के बाद ये चौका मिला खैबर को। खराब बॉल थी ये, एक तो फुल पेस डिलीवरी कराई थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप, बहुत रूम दे दिया था, सिर्फ फील्डर को बीट करने की देर थी, ये चौके की तरफ जाना ही था गेंद। यहाँ पे इस तरह की गलतियाँ कर नहीं सकता नॉर्दर्न, क्योंकि रन्स बहुत ज़्यादा रह नहीं गए। प्रोटेक्शन लेग साइड पे ज़रूर मौजूद है, लेकिन किसी भी सरफेस पे अगर आप रूम दे देंगे बल्लेबाज को तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएगा।
अभी भी अराउंड द विकेट आएंगे। शनवारी डीप कवर है ऑफ साइड में, डीप थर्ड मैन अभी भी। और ये अच्छा स्ट्रोक, यहाँ पर दूसरा रन बड़े इत्मीनान से बनाएंगे। तो विकेट कीपर की तरफ पहुंची लेकिन देर से। पिछली गेंदों में 6 रन बने हैं, इससे एक रवानी का एहसास होने लगा है। सोहेल नजीर विकेट कीपर हैं। राउंड द विकेट आने का अमूमन जो मकसद होता है वो यही होता है कि रूम ना दिया जाए बल्लेबाज को, विद इन स्टंप्स विद इन बॉडी कराई जाए, प्रोटेक्शन भी उनकी मौजूद है। लॉन्ग ऑन, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट है, वहां पे ज्यादा खिलाना चाहिए। आउटसाइड ऑफ स्टंप अगर ये बार बार डिलीवरी करेंगे तो उनको महंगा साबित हो सकता है ये। फिर दूसरे रन की चाल चलना चाहते हैं लेकिन नासिर नवाज थ्रो हमेशा बहुत जोर से आती है। यहाँ ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो अराउंड द विकेट वो इसलिए आना चाहते हैं कि खालिद उस्मान अच्छा खेलते हैं ऑफ साइड में और उन्हें इससे बाज रखा जाए, लेकिन लाइंस ज़्यादा बेहतर इख्तियार अभी तक की नहीं उस्मान शनवारी ने, इसलिए ये महंगा ओवर है। 8 रन वो दे चुके हैं, 8.71 रन हर ओवर में दरकार हैं, तो इसलिए तकरीबन अपना हदफ जो है वो पा लिया है। ये पाकिस्तान और इंग्लैंड की अब 7 T20 बैन अवी मैचेस की सीरीज कराची में शुरू होने वाली है। एक और अच्छा रन ये भी छीन लिया, इस बार कवर के फील्डर बहुत पीछे से आए थे दायरे के दहाने से, इसलिए आखिर में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। महंगा ओवर शनवारी का खत्म हुआ 109 पे 5। आदिल अमीन और खालिद उस्मान के दरमियान अच्छी पार्टनरशिप हो रही है, क्योंकि 5वीं विकेट 87 रन पर गिर गई थी। उस वक्त दबाव खैबर पर था। हारिस ने आज 41 रन की उम्दा इनिंग्स खेली, अपनी खोई हुई फॉर्म उन्होंने बहाल करने की कोशिश की। कामरान गुलाम और इसरार के जल्दी जाने पर दबाव आया। सरवर आफरीदी भी आज महरान का सामना नहीं कर सके और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। ये 155 रन जो हैं वो नॉर्दर्न ने मुल्तान के खिलाफ डिफेंड किए हुए हैं, और ये कमाल शॉट था। आदिल अमीन को जो ही थोड़ी सी जगह नजर आई और थोड़ी सी लेंथ भी, उन्होंने इसे उठा दिया, टाइम किया सामने की जानिब इस जोरदार छक्के के लिए। टाइमिंग से भरपूर शॉट था। अपना हुनर दिखा रहे हैं यहाँ पे आदिल अमीन, बहुत ही आसानी से ये छक्का हासिल किया है। बहुत खराब लेंथ थी, लाइन आउटसाइड ऑफ स्टंप थी, सिर्फ बल्ले दिखाने की जरूरत थी और वही कमाल बाकमाल शॉट थी ये। हवा में और गेंद पहुंच गई हाथों में। नासिर नवाज आज बहुत मसरूफ शाम गुजार रहे हैं। एक और विकेट उनके इस उम्दा कैच की मरहून मिन्नत, दूर से खेलते हुए गए आदिल अमीन, जिन्होंने पिछली गेंद पर अच्छा टाइम किया था लेकिन इस बार प्लेस बिल्कुल नहीं कर सके। थोड़ी लालच में आ गए थे, करना चाह रहे थे लेकिन हाफ हार्टेड शॉट खेल दी सीधा नासिर नवाज के हाथ में और कामयाबी हासिल हुई। जमान को एक और बड़ा धचका केपी के लिए 33 बना के आदिल अमीन वापस 115 पे 6। जब भी खैबर पख्तूनख्वा की टीम इस मैच में पेशकदमी करना शुरू करती है, इस इनिंग्स में एक विकेट गिर जाती है। यही हाल रहा है इस पूरी इनिंग्स का।
महाज खान, ख्याल ये है टीम इंतजामिया का कि ये दूसरे बॉलर से, फास्ट बॉलर से ज़्यादा बेहतर बैटिंग कर लेते हैं, इसलिए नंबर 8 की पोजीशन इनको दी गई है। और आजकल नंबर 8 पर आप टेल अंडर को अफोर्ड करते नहीं हैं T20 में। 28 रन की पार्टनरशिप थी खालिद उस्मान और आदिल के दरमियान, और वो एक और बड़ा झटका लगा। लेग साइड में खेलने में कामयाब हुए। यहाँ 2 और तीसरा रन भी मुमकिन है, क्योंकि फील्डर को बड़ा लंबा फासला तय करना पड़ा मुबस्सिर को। यहाँ खुश नहीं है कप्तान, उनका ख्याल है कि महाज खान को भागना चाहिए था और ये रन मौजूद था। तीसरा रन यहाँ देखिए चिप करने के लिए गए, सीधा हाथों में खेल दिया नासिर के। एक बार एक्शन जो है वो पिक करना मुश्किल हो जाता है। ये जो स्विंग के साथ गेंद करने वाले बॉलर्स होते हैं, उनका बैट्समैन गलतियां कर जाते हैं ऐसी जी, लेकिन ऑन द मूव खेल गए शॉट, अगर स्टेबल होते तो ये लग जाती। अच्छा बाउंसर मिक्स अप कर रहे हैं अपनी रफ्तार और लेंथ दोनों को, क्योंकि इन डेथ ओवर्स में मैंने देखा है कि बहुत कम बॉलर्स हैं जो इतनी अच्छी बॉलिंग करते हैं, जो जमान करते हैं। उनको बहुत सूझबूझ है बॉलिंग करने की, खासतौर पर इस मकाम पर पहुंचकर। PSL में जो एक्सपोजर इनको मिला था, जो जिम्मेदारी इन्होंने निभाई, उससे बहुत कुछ सीखा इन्होंने, और बॉलिंग में अब झलक भी नजर आती है। पैड को लगती हुई गई और रन हासिल कर लिया गया। ये फील्डिंग लैप्सेस जो है वो महंगे पड़ सकते हैं नॉर्दर्न को। इस वक्त प्रेशर केपी पे ज्यादा है, यहाँ पे क्लीन गैदर नहीं कर पाए रोहेल, जिसके नतीजे में एक रन बनाने में कामयाब हुए। यहाँ पे भारी जिम्मेदारी जो है खालिद उस्मान पे है। बेहतर ही होगा कि स्ट्राइक वो अपने पास रखें। माज खान की कोशिश होगी कि सिंगल देके उन्हें ज्यादा सामने लाया जाए। यहाँ खालिद उस्मान ही इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट भी हैं नॉर्दर्न के 2 पॉइंट्स हासिल करने में। अगर ये आखिर तक खेल गए तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की टीम को जीत मिल जाएगी। हम ये कह सकते हैं इनके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए 118 पर 6। Khyber Pakhtunkhwa required 35 more runs to win off 24 deliveries, and if you look at the worm, it's been ups and down, crossing twice and now just dipping a little. Khyber Pakhtunkhwa as we come at the business end of this game. Amir Jamal, that's a good run. Shah Faisal, 35, in fact 34 of 23. It's going down to the wire. It is indeed. Great game. Both the teams not giving an inch. Khyber Pakhtunkhwa, you would say, have been sloppy. They've lost wickets at the wrong time. The last one, Adil Amin, after hitting a 6. That was a crucial wicket. Remember the batters to come, Ahsanullah, Imran Khan Senior, Imran Khan Junior. Really not known for their batting prowess. Ahsan, especially with that injury scare as well. He's been brilliant. Amir Jamal, I think he's been the best cricketer for Northern in this tournament. He's bowled really well in those crucial areas, and again, this pitch is assisting him. Just nip through. He seems to be a very wholehearted cricketer. He gives it his all. He made a contribution with the bat. Today is not a high-scoring game. His 22, unbeaten 22, came at the back end of the innings, and now with the ball, really bending his back.
Not quite timing it. No, says Mars. They're a very energetic side at the moment, Northern. Young legs, they're making it difficult for this KP side. They're such a big side. And we all were hoping that this 153 runs will be a walk in the park for them. But they've done a great job, this Northern side, courtesy to their brilliant fielding, excellent bowling, and some thoughtful captaincy too by Sohail Tanveer. I was outside just a while ago and you could hear in the field they're very chirpy. We saw you. But what I saw, that Northern was really into the game. Everybody was backing each other. There's plenty of noise. Amir is concentrating on that line outside the off stump though. Just one run for Khalid Usman. He missed out on 2 cut shots that he would have liked to have gotten away. But Amir had 5 fielders for him on the offside. That's the line he was persisting with. Probably he knows a thing or two about Khalid Usman. Yeah, excellent cricketer, all-round cricketer. But this situation, it's a mixed situation at the moment. They required 33 of 20, but they've lost 6 wickets. Feels well scattered for Amir. Deep square leg and deep mid wicket in place. So they've lost 6 wickets. They don't have many batters to come. But their runs are only 33 of 20. That goes in their favour and something doesn't go in their favour. Such a mixed situation for KP at the moment. Mars is a best score of 2 before this match. Singles won't bother Northern much at the moment. You would feel that Khyber Pakhtunkhwa will be thinking they're 1 wicket down too many, because like you just said, Mars' best score was 2. Ejaz Ahmed, the Northern coach, Masood Anwar, the manager, really pensive. This game is right on the knife edge. "32 runs, 19 deliveries. But the good part is that this is the last over for Northern, I say. For KP, I said, I beg your pardon. That this is the last delivery from Amir. Nicely done. That is excellent. Should look to get 2. No, says Khalid Usman. Right on time. 17 gone, 123 for 6. Third umpire will want to have a look though. I think everything is in sync. This is safe, I have a feeling, but Khalid Usman probably realized a little bit late that this was the last delivery of the over, so he want to keep the strike. Rohail had to drag the throw from quite a distance there, and by the time he got the ball to the stumps, Mars had made a comeback. So 3 to go, 122 for 6. It's very humid. You can tell. Very sweaty. Let's have a look at the options that are available for Sohail Tanveer to bowl these last 3 overs. 1 for himself, 1 for Zaman Khan, and Usman Shinwari is most likely to bowl the last one. They're good bowlers. It's not going to be easy for Khalid Usman because all eyes are on him for KP. Ahmed Jamal 1 for 26 and Mehran Mumtaz 3 for 20. I thought bowled quite beautifully. The left arm spinner definitely was the pick. 3 overs to go. Who are you picking as your winner, Ali? It's touch and go. I wish I was good at it. And you know I'm not good at all this judging which team is going to win. I just want a good cricket game. I just want this game to go till the last ball. And then better team should win. And today, Northern have been a good side. We can clearly say that. "31 of 18. See, Shinwari. Oh, now they've changed their mind. It's Zaman Khan. I think they want to leave as many runs as possible for the last. Or maybe they want to take the wicket of Khalid Usman and just go for the kill here. Now that's the only purpose of bringing in Zaman Khan at the moment. Remember the last time Shinwari had to bowl the last over? It was expensive. So probably that's why he thought at one moment. Long on, deep mid-wicket, deep square leg in place for Zaman Khan. Mid-off up in the circle. That's what he should be eyeing on. Timing, not quite there. Mid-off is up in the ring. That's one option for Khalid Usman.
Then 45, he's up in the ring as well. Sohail Tanveer, another area. Once again, this one hurrying Khalid Usman and hit him on the splice. Straight back to Zaman, who a little slip, but all is well that ends well. But the boundary options that mid-off or fine leg, which way Khalid will go. Single. Well, no more injuries for Northern, I tell you. They've lost enough players in this tournament, starting off with the captain, Ali Imran, Umar Amin, Hassan Nawaz. They're all very good cricketers, unfit. So, for Northern, they don't want any more injury in their side. 30 of 16. Sohail Tanveer has done a good job captaining this side for Northern. No more injuries. You got Zaman Khan's hand, the right hand is also taped up. Ali Imran is at least back with the squad. He was really looking very nice at the beginning of the tournament. Plenty to think about for Samiullah Niazi. He's cooling off, closer to the fan. He's feeling the heat. Uh-oh. What did he do there? He's lost his run-up. Nerves. Shah Faisal, nerves. Well, he's got nerves of steel. We know about Zaman Khan. He's a very cool customer. Same can be said about Khalid Usman. Nicely done. That should be the role from Maz. Just give the strike back to Khalid Usman. No heroics needed. Simple, keep it simple. Give the strike, maximum strike to Khalid Usman, and he would do it. With the floodlights on, I think the ball will slide a little bit better, so don't have to bludgeon the ball in the last over. Amir Jamal, one thought Khalid Usman was looking to hit that cut shot too hard. He had the room and the length, but he missed out on that. Using the order of the day. 10 and over wouldn't scare modern day batters, that's for sure. Oh, that's in the air, but away from the fielder. Is it gone all the way? Not quite, just a couple of bounces and over the boundary line. So much needed boundary for Khalid Usman and KP. This will definitely give them a lot of hope. Yeah, mid-off was up. That's one of his options. Slow delivery. It wasn't a clean connection, but just enough bat to get it over the head of that fielder and a couple of bounces. This is good batting from Khalid Usman. He took the right option. Could easily have dragged towards the onside, but he stayed with the shot for long enough. And himself a boundary. He didn't like it. He wanted a 6 out of it. Wide. Under pressure. Zaman Khan. This is such a crucial game because we're coming to the business end of this tournament. Every game is very important to win, especially for Northern, because KP are sitting relaxed at the top and they're enjoying it. Why not? Cricket has come to Multan. Under lights. Top Pakistani cricketers playing. What else do you want? Well, definitely when the lights come on, it does bring spectators to the ground. And remember, we got another game coming up. And if KP loses this and Balochistan wins the next one, they'll be tied at 10 points at the top. In the air. Not opting to go Khalid Usman, and rightly so, because if he gets out here, it will be done. So he knows that he has to go till the last delivery. See, he's tried those pull shots quite a few times now. On none of the occasions he was able to get hold of it. That bounce is steepling. Got big on him once again. What is the other option he can use if you can't get away the pull shot? Maybe behind square on the offside. If you beat that point fielder, you can get a boundary. Down the track, flat batted it. There is fielder, does well. Fielding has been perfect, spot on by Northern boys. 18 gone, 130 for 6.
Coming up next, Balochistan versus Sindh, another mouth-watering contest. Both the teams have done exceptionally well in patches. Balochistan lost the last encounter to the home side through Duckworth-Lewis. So the equation is that Khyber Pakhtunkhwa required 23 runs to win of just 12 deliveries. And it's going to be the captain, Sohail Tanveer, to bowl this very important over. How many runs would KP want for the last over? That's the question. Do they go after him? Khalid Usman. Oh, it's in the air. It's in the air. He's building for it. Everyone is. Pai says no, rightly so. Because from here it looked like only pad. But we know that these appeals can be a tricky one. Wow, Sohail Tanveer was convinced it did hit the glove. Have a close look. Well, and a quick run as well. Rohil Nazir had the ball. Look at that. Sohail Tanveer think it was the glove. Pleading. That's how important this wicket was. Khalid Usman. 11 of 22. I'll take one. Cricket has been fantastic in this tournament. You will have to say this. We've seen so many nail-biters. It's been excellent cricket from all the sides. Have a look at that last appeal that Sohail Tanveer did. Then that was clear that it was off the pad. Rohil Nazir was late, but he did appeal after looking at Sohail Tanveer. You rightly said, early tournament has been fantastic and we have had many close games. We had a 1-run and then we had quite a few games with the margin of 2 runs, 3 runs. This one is looking like one of those. Down the track, straight. Straight should look to get to. Maaz Khan is not coming. He tried. Look at the throw. It was such a wide throw. Pressure on everyone in the ground. KP has enough wickets. He should have gone for the second run. Khalid Usman is charging down the wicket. Look at Maaz. He should be game for it here. Yeah, the wild throw as well. They need a boundary from this end, from Maaz end. Can he sneak in with one boundary? Which other areas? Mid-off, up in the circle. That's what he should be eyeing on. Clever. Very clever by Sohail Tanveer. Usman Khalid. Oh, wonderful running. That is excellent by Khalid Usman. Top cricket. Every run is vitally important. And even though it was Maaz on strike, Khalid was convinced to go for the second run. Sohail Tanveer, could he have gone there? Probably yes. But I was talking about Northern's results. They have played some really tight games. They lost by 10 runs, they lost by 2 runs, then they won by 3 runs, won by 5 runs and won by 1 run. Northern is the team to watch in this tournament. They provide excellent entertainment and tonight is no different. Good bouncer. Excellent. That is experience for you. Sohail Tanveer, who's played cricket all around the world. He's been into this situation so many times. Just 4 times that you just mentioned in this tournament. And he has played some 370 odd games in his career. So he's been around for a long time and now 18 runs, 7 deliveries. That was a sharp one. Excellent cricketing wicket this has been. You have to give credit to the groundsman. Produced a wonderful strip that has produced some excellent cricket. Are you nervous about Shinwari bowling the final over? I don't know. I don't know. Because we know Shinwari has a habit of giving away runs, come under pressure in the last over. They have to give him enough runs. 15 runs would help. Oh, he's bowled him, but it's a no ball. Oh my God.
What is happening? That is experienced person, Sohail Tanveer. He made a mistake. Drama. Absolute drama here at the Multan Cricket Stadium. This is second no ball of the day. Produced a perfect yorker, but he overstepped. Only himself to blame for that. And they run a run as well, so Khalid is back on strike. Clearly over. So 2 runs of that delivery. So now 16 needed of 7, and Khalid is on strike. Now that's the worst part. Not just he's been denied of the wicket, he's given away 2 extra runs without the delivery, and they still got 1 delivery of this over. Khalid Usman to face. But you go for a single, go for a big hit you have to, because this is a free hit. Khalid Usman goes deep. That is excellent delivery. He's called for 2. He should get it. No, says Khalid Usman. Everything is happening. Everything is happening here. End of 19th. 138 for 6. KP need 15 of last 6 deliveries. That's the yorker. Absolutely perfect. Just the base of the leg stump. Knocked the stump right out of the ground. But Maaz heard the call. Smart enough to cross over for a single. This is an absolute cliffhanger here. But 15 runs required. Khalid Usman will be on strike. Look at the northern camp. They've all disappeared. Just the coach Ijaz Ahmed scratching his head. You have to give him credit. They've made a match out of that. Shah Faisal, I have a question. When they were last 3 overs, they decided to go for Shinwari at that moment. Would that have been a good time to bowl him over there? I will tell you in about 3.5 minutes. Because we know that he has a habit of just being under pressure. I hope this is not the day for Northern, because 15 runs of 6 deliveries, you'll always think that the bowling side will win, but we also know what Khalid Usman is made of. Hold your breath, folks, because this game can go anywhere. This is an absolute treat to watch, I can tell you. You can not ask for better entertainment than this. Do whatever. Just don't bowl a no ball. Just don't give extra runs. Let them make it. Let them do hard work for these 15 runs. What's the boundary options there for Khalid Usman? He's looking at the onside field. One leg is up. Mid-off is up. 15. Make it 9, because this is going all the way into the stands. What a wonderful start to the over by KP's captain. It's just 9 now. That's exactly he was looking before the ball. He had the area in the mind. Shinwari, you have to say, provided him with the length. This is poor stuff at this juncture, because this is the length Khalid Usman was looking for. And once he saw that, his eyes lit up. And good night. What a fantastic cricketer this lad is, Khalid Usman. Second thoughts? I'm asking you in about 2 minutes. Are you regretting this option of giving the last over to Shinwari? As long as he doesn't bowl a no ball, I'm not going to say anything bad. Oh, what a start to this last over. What drama. This was nothing ball though. You don't want to bowl length ball at this stage. 9 of 5. Steaming in Shinwari. Slower one. He's not going to run one for sure. Wow, so Khalid Usman has decided he's going to do it all on his own. But look at that. Went deep in his crease. Look at that base. Very solid. And once he made the connection, sweet sound of the ball striking the ball. What a game of cricket. The reason we love cricket, it's this sort of games. 9 of 4. 2 top-class teams up against each other. Fielder at third is up in the ring as well now. 45. Mid-off has gone back. Usman Khan Shinwari up against Khalid Usman. Down the track, not quite timing it. Look for 2. He has to come back. Mars must come back, and he does. That is good cricket. Well, like I said, we've seen
plenty of close finishes in this tournament. We haven't seen a super over. Are you ready for one? I am, definitely I am. But this group of boys will be hoping that they win it, because 7 runs, 3 deliveries. Captain Khalid Usman, he's tired, he's done a great job for his team. He stayed there till the end. He was with Maaz Khan for the last 3 overs. He's done a great job. Well, same field. Extra cover is lurking right back at the edge of the circle. Everybody's watching with intent. That's a good delivery. That is a good delivery. Oh, Khalid Usman is hoping and looking around everywhere for a wide. But there are only 2 directions you should be looking at: square leg and straight. And they were not interested. He really thought that it was above his head. Usman Shinwari really pitched it very short. This will be a good angle. This was clearly over his head. Yep, but that's what he's asking for, that square leg umpire, Zamir Haider, that this was a wide, and rightly so. Look at that. All good. All good? Definitely. Umpiring is not an easy job, and over the course of a long season, these things do even out, so no hard feelings. It was just a judgment call, and Khalid Usman is a little break though. Drinks have come on. Players are talking about it. The pressure is there for everyone to see. Just don't ball a no ball. That's it. Let him hit you. Because if they require 7 runs, 2 deliveries, you don't have to make an error. And don't bowl length as well. Round the wicket, the angle, it wouldn't help. 7. Come back. Maaz. Oh no, he's not going for it. He's not going for it. He could have easily come back for 2 maybe. And if he had lost his wicket, Maaz, that would have made no difference. Good call, Ali. Very good call. He should have gone hard because he wasn't running to the danger end for the 2nd run. But then he decided he need 1-6, and that will take the game to the super over. Shinwari has really kept his cool here. Excellent over so far. 1 ball, 7 required to win, 6 to tie, and super over. Everyone is coming inside. Square leg is in. There's 5 leg inside the circle. What a wonderful game of cricket we have just witnessed. It's not done yet. We're not done yet because they require 7 runs off the last delivery. If Shinwari doesn't bowl a no ball or a wide, they can only be a super over. What Sohail Tanvir is doing is that he's slowing the game, taking his time, making Khalid Usman wait, change of field. Square leg has gone back. Point has come into the circle. So behind square on the offside, there's no one deep. Full outside the off stump. That is what Shinwari would be hoping. Last delivery, 7 runs require. Oh, that's wonderful. That's exactly what I was talking about. Outside the off stump, a Yorker. Well done, Usman Khan Shinwari. After being hit for a 6 on the very first delivery, he's made a wonderful comeback. And the great effort of Khalid Usman going in vain. They could not quite win it in the end. And Northern winning it by 7 runs. Northern has made a habit of this because they really do bowl well in the death. They defend totals. Somehow they explore the Khyber Pakhtunkhwa. But Northern's bowling in the death has been sensational. Today, the task wasn't as difficult because they had only 1 recognized batter to bowl at. Khalid Usman tried, but Northern celebrate once again like they did the other night. The other night they won by 1 run, and today it's 6 runs. But what a game of cricket we've just had. You have to give all the credit to this young side of Northern, and that is how it tended. Outside the off stump, full. That was good thought process behind this delivery. And we can expect that, having Sohail Tanvir in the camp. All those discussion before the last delivery, it has worked, it has paid off for Northern.
And they are jubilant. And that boy, Mehran Mumtazi, did a great job in the middle overs. Got the wicket of Haris and made Northern come back in this game. And in the end, winning it. These kind of wins really brings the group together. As you can see, they're all celebrating. There is a pep talk going on. Amir Jamal has been sensational. Shinwari has really done the job after getting hit for that 6 on the first delivery of the last over. There was some scare, but then he came back strongly. Khalid Usman's brave knock at the end wasn't enough to steer KP, but that middle order and top order really failed. Haris, 41 of 17, needed to go through, but then Adil Amin's knock also curtailed. Just 146 for 6. Oh, they've bowled really well as a bowling unit. Sohail Tanvir, although couldn't take a wicket, but he bowled really well in the death. Zaman Khan, 2 wickets, 1 for Amir Jamal. But the pick of the bowlers is Mehran Mumtaz. 4 overs, he just gave away 20 runs and got 3 important wickets and made his team won this game by 6 runs. It's just a fantastic game of cricket we've just witnessed between Northern and KP. And yes, definitely they deserved all the congrats. They deserve all the credit, this Northern side. And let's have a look at the highlights. They started off all right. Runs kept coming early on. Haris was excellent. So was Saibzada Farhan early on. Zaman Khan, he was really brutal on him. He's not scared of playing over the head. Saibzada Farhan also played a few tricks, but Haris was just magnificent. This was a big one when Saibzada Farhan lost his wicket, and catching has been magnificent. Brilliant catching, especially Nasir Nawaz. Haris kept on taking runs, 16 ball 42, some lusty blows, some nice use of the wrist. This was probably the shot of the tournament that I've witnessed. That's the moment where KP's innings was turned upside down. Wickets falling regularly. First Haris and then Israrullah. Kamran Ghulam was unlucky. He strangled down the leg side. Adil Amin steadied the ship, batted with calm demeanor, found the boundaries. Sarwar Afridi, wrong choice of shot, you have to say, because the fine leg was up. There was no point in playing that shot. But then Adil Amin and Khalid Usman guided the scoring along. This was magnificent. Pure timing. But right after that, he lost the wicket once again at the wrong time. Adil Amin will be cursing himself for that. Khalid Usman's knock fought really hard till the end on few boundaries as he was left alone. That was spectacular, but it won't show in the book. But that will, because this was a sweet blow. KP needed another one of that in the last over, but Usman Shinwari made sure they don't get that. And Northern celebrate in the end. Yet another humdinger. And they ran out winners with 6 runs, the margin. Flag is flying high because Northern have won this game by 6 runs. Batting first, scoring 152 runs. Zishan played a brilliant inning of 52. Ehsanullah, probably a surprise package for KP, taking 3 wickets. And in reply, they were 6 runs short, KP. 146 they scored. 41 for Mohammad. Adil Amin scored 33. Khalid, 28. Mehran Mumtaz, pick of the bowlers, 3 wickets for 20. It's interesting, the points table, Shah Faisal. And after this win of Northern, it's more interesting now. It's very, very tight. Look at that. The 4 points separate 5 teams. But then Northern have really closed in on Khyber Pakhtunkhwa, just 2 points behind. And the next one between Balochistan and Sindh would really make changes to this points table, because Khyber Pakhtunkhwa will be threatened to lose their top spot if Balochistan win that contest. Well, let's all of us catch our breaths. We take a short break and we'll come back with a post-match presentation with Sikandar Bakht.
Hello and welcome to the post-match presentation of match 21 here at the Kingdom Valley National T20. And this was between Northern and KP, and once again KP yet to find a win here in Multan Cricket Stadium in this tournament. And Northern winning this one by 6 runs. Brilliant performance and great last over from Usman Shinwari. Before I invite the player of the match, I'll welcome Mr. Mohammad Noman Ashraf. He is Sales Executive, Kingdom Valley. Thank you for joining us. And he will present the Kingdom Valley Player of the Match, 25,000 rupees cash plus a trophy. And that goes to Mehran Mumtaz for his brilliant 4 overs, 3 for 20. Bowled brilliantly, kept it tight, and not only that, he got wickets at crucial stages of the game and helped the side win this match. We'll speak to Mehran now. Mehran, शानदार परफॉर्मेंस रही, एंजॉय कर रहे हैं अपने स्पेल को. आज इस पिच को देख के क्या हिकमत अमली अपनाई थी? इनटू द पिच बॉलिंग ज़्यादा कामयाब थी, यहाँ पे किस तरह से ऑपरेट किया? सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, माँ बाप की दुआएं. ये हमारे लिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट था जीतना, और मेरा यही था गोल कि टारगेट कम है, 150 टारगेट है, लेकिन मैंने अपनी अच्छी बॉलिंग करनी है. अगर मैं अपनी अच्छी बॉलिंग करूँगा तो टीम जीतेगी, क्योंकि मैं टीम का मेन बॉलर हूँ. तो एजाज भी ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया हुआ, तो उसकी वजह से मेरी अच्छी बॉलिंग. क्या डिफरेंस है, क्योंकि जब छोटा छोटा होता है तो आप फिर कोशिश करते हैं एज अ बॉलिंग यूनिट के बॉल आउट करना है इनको, क्योंकि आप सेव नहीं कर पाते, तो उसमें कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है आपकी बॉलिंग में कि कंटेन करने के अलावा विकेट लेने हैं? विकेट मैं तो जिस सिर्फ सोहेल भाई ने जो बताया हुआ था कि आपने अपनी लाइन पे बॉल करने हैं, और टीम की तरफ से बहुत कॉन्फिडेंस था, तो इस वजह से अच्छी परफॉर्मेंस हुई. चलिए, बहुत एंजॉय किया आपकी बॉलिंग, इसी तरह बॉल करते रहिए. एंड दैट वाज मेहरान मुमताज, 3 for 20. विल कॉल खालिद उस्मान नाउ. खालिद, अभी तक केपी को रास नहीं आ रहा मुल्तान, लेकिन क्लोज आ गया था मैच. कहाँ पे फील करते हैं? बॉलिंग में रन ज़्यादा दिए, चेजेबल था ये भी, कहीं बैटिंग में कुछ गलतियाँ हुई हैं? नहीं जी, बिल्कुल 153 इजी टारगेट था. और अगर आप देख लें, हमने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया था. सर्कल में हमने तकरीबन 60 रन्स किए, लेकिन बाद में वो जो है बैट्समैनों से एग्जीक्यूट नहीं हुआ. जो 8 या मेरा ख्याल से 7 की एवरेज चाहिए थी हमें, तो उधर 13 ओवर्स में हमारे तकरीबन 5 विकेटें गिर गई, जिसकी वजह से हम मैच यहाँ तक ले आए और हार गए मैच. इस पिच को अगर देखते हैं, वैसे तो स्क्वायर में काफ़ी रन्स हैं, 150 पे आपने अच्छी बॉलिंग से आउट किया. क्या वजह है, हिट इतनी आसानी से लग नहीं रही थी यहाँ पर? हर थोड़ा विकेट में बाउंस ज़्यादा था, इसलिए वेट आराम से नहीं लग रही थी. लेकिन प्रोफेशनल को मेरे ख्याल से इन चीज़ों को जितना जल्द से जल्द हो सके तो एग्जीक्यूट कर ले, एडजस्ट कर ले अपने आप को. ये वजह हो सकती है कि क्योंकि केपी की परफॉर्मेंस पिंडी में इतनी शानदार रही है कि आप लोगों के लोअर मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर की बैटिंग ही नहीं आई है, तो अचानक जब उस पर आया लोड तो थोड़ा सा नहीं, लोअर ऑर्डर तो कर रही है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा हमें मसला हो रहा है, जो आगे मैचों में इंशाल्लाह इसको हम प्लान करेंगे इंशाल्लाह. चलिए ठीक है, गुड लक फॉर द रिमेनिंग गेम्स. अभी भी आपकी टीम ऊपर है पॉइंट्स टेबल में. सोहेल तनवीर को इनवाइट करते हैं. ही इज द कैप्टन ऑफ नॉर्दर्न टुडे इन द एब्सेंस ऑफ उमर अमीन. वी विल हैव अ वर्ड विद सोहेल. Sohail, as a captain, it takes a lot out of you, plus the responsibility as a bowler. But you had to win this as a team. Well, definitely. इस तरह की विन जो है वो आपको एज ए टीम बड़ी मोरल बूस्टर होती है, और यही हमने बात की जब पहली इनिंग हुई. 150 रन हमने किए, तो मैंने हर्डल में यही बात की कि बड़ी टीमें जो होती हैं वो इस तरह के जब मैचेस आप जीतते हैं तो इस तरह के टूर्नामेंट में आपको बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है. और मैंने एक बात कही थी कि आपने सिर्फ इंटेंसिटी दिखानी है फील्डिंग के अंदर और बिलीव रखना है. पहले 5 ओवर उनको बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ, बट वी केप्ट ऑन सेइंग कि यार 1-2 विकेट की बात है, क्योंकि चेज़ में जब आप विकेटें लेते रहते हैं तो दूसरी टीम अंडर प्रेशर होती है, और वही हुआ कि वी केप्ट ऑन टेकिंग विकेट्स. तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू होल बॉलिंग यूनिट, होल नॉर्दर्न प्लेइंग 11. आई थिंक द वे वी प्लेड, द वे वी फील्डेड, एंड जो इंटेंसिटी लेवल था वो इट वाज अमेजिंग. ऐसे टोटल्स में कभी कभार बॉलिंग सेकंड में ये होता है कि हम शायद इसको सेव ना कर पाए, हमें बॉल आउट करना होगा इनको, तो उसमें कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है एज अ बॉलिंग यूनिट? नहीं, मेरे ख्याल में आपको बड़ा बैलेंस लेके चलना होता है, क्योंकि आप जब सम टाइम ओवर अटैक करने जाते हैं तो उसमें रन्स खुले देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि रन्स का भी प्रेशर आपको रखना होता है. तो बड़ा एक थिन लाइन होती है. तो वी वर लकी कि वी मेंटेन दैट, कि वी केप्ट ऑन टेकिंग विकेट एज ए सेड अर्लियर, और साथ में हमने रन्स भी रोके रखे. हमने आज पिच मुश्किल था थोड़ा सा, जो बैक ऑफ लेंथ बॉल था वो बड़ा रश करके आ रहा था, स्किट होके आ रहा था. इट वाजंट इजी टू बैट. सो आई थिंक कि हमने राइट एरियाज पे एज ए फास्ट बॉलिंग यूनिट बॉलिंग की, और द वे मेहरान बोल्ड, he was struggling, he didn't bowl well in first couple of games, but the way he came back, I think it was amazing, and he has a bright future. Okay, hand is good. Well, chal raha hai. Chaliye. Thank you. That was Sohail Tanveer, captain of Northern, and that concludes the presentation.
The action continues here at Multan Stadium for Kingdom Valley National T20 Cup. It's Balochistan taking on Sindh for match 22. It's going to be a competitive game. We'll join you for the action, so don't go away. Hits over the keeper's head. Another pass, edge and gone. 4 runs. Down the wicket, get the charge, yes. They earn him a boundary. Wicket मिलके इमरान को आहिस्ता गेंद आई off the wicket. Knock him over. That is brilliant. Couple of bounces into the fence. It's in the air, but it'll go all the way. That's a run. और शानदार डिलीवरी रन हुई और विकेट कीपर ने काम तमाम कर दिया. ये गई हवा में डाइव करके इसे हाथों हाथ ले लिया. ऑफ साइड में हवा में गई, ज्यादा दूर नहीं थी पॉइंट से और ना ही थर्ड मैन से, लेकिन फिर भी 4 रन मिल गए हवा में और गेंद पहुंच गई हाथों में.